Welcome back to National Bank Stadium, and it's the big one. Lahore versus Karachi. This time it is Lahore Blues versus Karachi Whites, coming to you from National Bank Stadium in Karachi. Both the teams arrived just a while ago, gearing up for the big one. We expect to see some great matchups in this contest, and we're really looking forward to it. It's a beautiful evening, and the teams, they arrived well in time and in preparation, और इस मैच की तैयारी कर चुकी हैं दोनों टीमें। इन्होंने टोन को सेट किया और इस रन चेस को बहुत आसान बना दिया अपनी टीम के लिए। और जो बॉलिंग और फील्डिंग थी पेशावर की शानदार थी, लेकिन जो बैटिंग थी उसने तो बिल्कुल शो लूट लिया जिसे कहना चाहिए। मेरे साथ मौजूद हैं अहमद सईद, उनसे बात करेंगे इस पहले मैच के बारे में। वेलकम अलोंग अहमद। और पहला मैच आपने देखा, बड़ी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस थी पेशावर की, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल जी, पेशावर एक वो टीम है जो कि ये कॉन्टेस्ट जीत रहे हैं, पूरा ओवरऑल टूर्नामेंट जीतने के लिए एक बड़ी कंटेंडर है। बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी जो खूबी है वो जो ब्रांड जो क्रिकेट है, मैं ये समझता हूँ कि इट इज़ द क्लोजेस्ट टू व्हाट इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स आर। जो जिस तरह की क्रिकेट वो खेलते हैं, हारने का कोई डर नहीं है उनको। जीतने की ख्वाहिश से ज़्यादा बड़ा अहमियत इस बात की है कि हारने का डर आपके पास ना हो। उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपके पास वो स्किल सेट मौजूद हो, जो कि पेशावर के पास इस वक्त नज़र आ रहा है। बैलेंस बहुत बेहतरीन है, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बना हुआ है उनका, हम आहंगी बहुत है उनके खिलाड़ियों में, क्योंकि बहुत क्रिकेट साथ खेलते हैं। तो मेरा ख्याल से बड़ा मुश्किल हो जाएगा टीमों को उनसे मैच करना। और साहबजादा फरहान की बात करें, पूरा सीजन उन्होंने बहुत डोमिनेट किया है और यहाँ भी इस टूर्नामेंट में भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। आज फिर जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की, लाजवाब, बहुत ही बढ़िया। और सबसे अहम बात, कन्वेंशनल बैटिंग। ये देखिए शॉट्स उनके, पुल शॉट्स बड़ी जल्दी जगह पे आते हैं, बैकफुट ड्राइव्स, कवर ड्राइव्स, स्ट्रेट ड्राइव्स, सारी कन्वेंशनल शॉट्स हैं उनके पास। जो सबसे अच्छी बात है, रिस्क फ्री क्रिकेट खेलते हैं और इसीलिए जो है वो इतना डोमिनेंट है। अच्छी बॉलिंग भी हो रही है कि उसके खिलाफ भी रन बनाने इनको आते हैं। तो इस वक्त मेरा ख्याल से इन सबलाइम फॉर्म। और जो इनके ओपनिंग पार्टनर थे उनकी भी बात ना की जाए तो ज्यादती होगी। हारिस बहुत ही एक्साइटिंग प्लेयर हैं। आई नो कि जिस तरह की वो अप्रोच है, हिट एंड मिस हैं, लेकिन जब वो खेलते हैं तो खूब खेलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और दोनों साहबजादा जब साथ बैटिंग करते हैं तो दोनों फ्लेवर्स आपको मिलते हैं। साहबजादा की खूबसूरत बैटिंग, कन्वेंशनल शॉट्स, और हारिस के इनोवेटिव शॉट्स, स्वीप्स, और ये बड़ा पुल इनका भी बड़ा अच्छा है। और बहुत ही नए नए शॉट्स बना के, और जैसे आप पिकअप शॉट्स होते हैं ये वो मारने का उनको, तो वो दोनों एक दूसरे को बड़ा कॉम्प्लीमेंट करते हैं ओपनिंग में पेशावर की। और हालांकि लाहौर की टीम ने ज़्यादा स्कोर नहीं किए, लेकिन अहमद शहजाद का जिक्र करेंगे, उन्होंने भी अपनी फॉर्म को कंटिन्यू किया। अहमद शहजाद 4th consecutive 50, ब्रिलियंट बैटिंग। अगेन आई वुड हैव टू से कन्वेंशनल बैटिंग करके दिखा रहे हैं वो साहबजादा। इस तरह के प्लेयर्स जो हैं वो ये दिखा रहे हैं कि T20 क्रिकेट में सिर्फ इट्स नॉट स्लॉग और हिट और मिस। अगर आप कन्वेंशनल बैटिंग करते हैं, स्ट्रेट बैट से भी खेलना चाहते हैं, तो यू कैन स्कोर एट पेस। और नाउ वी कम बैक टू द गेम ऑन हैंड, जो कि लाहौर कराची की डार्बी है। बहुत ही एक्साइटिंग मैच है और यहाँ पे भी दोनों टीमों में स्टार स्टडेड खिलाड़ी हैं। ओवरऑल ऑन द बैलेंस, आप दोनों टीमों के बैलेंस को कैसे देख रहे हैं? कौन सी टीम ज़्यादा आपको लग रहा है कि ज़्यादा बैलेंस्ड है? बैलेंस तो अगर आप बात करें तो आई एम श्योर कि कराची का नाम हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि फास्ट बॉलिंग में अगर आप देखें उनके पास सोहेल खान की तरह एक्सपीरियंस्ड बॉलर मौजूद है, हु कैन यूज़ द न्यू बॉल, ही कैन स्विंग इट बोथ वेज। और फिर जब पुरानी बॉल की बात आती है तो रिवर्स स्विंग भी वो कर सकते हैं। स्पिनर्स की जब बात, ये देखिए सोहेल खान के डेथ पे भी बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, और अर्ली ऑन जो कि वो विकेट टेकिंग जो एबिलिटी है उनकी विद द स्विंग, वो बहुत अहम है। और उसके अलावा अगर आप बात करें स्पिनर्स की, आप बात कर रहे थे। जी हाँ, स्पिनर्स हैं जैसे आरिफ याकूब, मेरे हिसाब से तो ही इज़ द स्टैंड आउट स्पिनर फॉर कराची वाइट्स सो फार। जो उनकी फ्लाइट है, मैं उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ। लेग स्पिनर्स में हम जो मिसिंग देखते हैं इवन एट द पाकिस्तान लेवल, वो ये है कि विकेट टेकिंग एबिलिटी जो है वो थोड़ी सी कम होती जा रही है। और आरिफ याकूब में ये एबिलिटी है, विद हिज फ्लाइट एंड विद हिज वेरिएशंस एज वेल। ही कैन बोल द फ्लिपर, ही कैन बोल द गुगली। तो वो आउट करने की हमेशा कोशिश करते हैं, विकेट लेने की कोशिश करते हैं, जो मिडिल ओवर्स में बहुत ज़रूरी है।
जी बिल्कुल, और आरिफ याकूब की आपने बात की, बहुत ज़्यादा एक एक्साइटिंग स्टोरी है। ड्यूरिंग द मैच उन पे मजीद बात करेंगे, लेकिन ये जो विकेट नज़र आ रही है, अगर इस पे भी एक करीबी डालें नज़र, तो ऐसा लगता है कि क्या इस पे रिस्ट स्पिनर्स के लिए कुछ है, क्योंकि अब जो इवनिंग लाइट्स इस पर पड़ी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि फिंगर स्पिनर्स के लिए कोई मार्जिन है। व्हाट अबाउट रिस्ट स्पिनर्स? हाँ जी, रिस्ट स्पिनर्स जो है वो फिंगर स्पिनर के मुकाबले में कुछ ना कुछ लाइफ एक्सट्रैक्ट कर ही लेता है विकेट से, नो मैटर व्हाट, इवन इफ इट्स बैटिंग पैराडाइज, वो थोड़ा सा अगर स्पिन नहीं कर पाता तो एटलीस्ट ही कैन गेट दैट एक्स्ट्रा बाउंस। तो जाहिर है रिस्ट स्पिनर जो है इट्स ऑलवेज गेट्स मोर परचेस ऑफ द विकेट, लेकिन जाहिर है जैसे आपने बात की कि उसकी क्वालिटी भी फिर आरिफ याकूब जैसी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, अगर पिच की बात की है तो ज़ाहिर है टॉस की भी बात करेंगे। टॉस भी क्रूशल है इस मैच में। तो अब से कुछ देर बाद पहले टॉस हुआ, हम आपको लिए चलते हैं सिकंदर बख्त की जानिब। It's time for the big one here. It's Lahore versus Karachi. Another encounter in the Super 8 of the National T20. I've got the two captains to my left, Hussain Talat, Asad Shafiq, and our match referee, Mr. Iqbal Sheikh. And who has the coin? Hussain, you have the coin? Heads. Heads is the call. It's tails. Hussain, Mike. सबसे पहले टॉस जीते हैं, क्या करेंगे? हम लोग बॉलिंग करेंगे। बॉलिंग करेंगे, ओके गुड। अभी पहला मैच देखा, थोड़ा सा वन साइडेड हो गया था, लेकिन कुछ रीडिंग है इस पिच की क्योंकि पहली बार यूज हो रही है। जी बिल्कुल, पहला मैच जैसे देखा है और स्पेशली ड्यू का सोचते हुए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग पहले बॉलिंग करेंगे और कम से कम रन पे इनको रोके और फिर चेज में डालें, और अगर ड्यू आती है बाद में तो बैटिंग के लिए ईजी हो जाता है। ओके, राउंड के मैचेस खत्म हो गए, सुपर 8 में आए हैं, कोई ऐसे एरियाज कप्तान आप सोच रहे हैं कि हमें इन पे थोड़ा काम करना है? बिल्कुल, मेरा ख्याल है आपको हमेशा जो है वो होता है कि आप इम्प्रूव करते रहे दिन ब दिन, और मेरा ख्याल है हमारी टीम ने ये प्रूव किया भी है। 4 आउट ऑफ 4 मैच खेले हैं, पर टीम से बात भी यही हुई है कि अब जो टॉप की 8 टीम्स है वो आ गई हैं ऊपर, और हमें अब अपनी एक गेम खेलनी होगी। तो जो थोड़ी बहुत चीज़ें थी उस पर बात की और इंशाल्लाह उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और पिछले मैच से इस मैच में कोई तब्दीलियां हैं टीम में? जी बिल्कुल, सलमान इरशाद नहीं है, उनकी जगह एक बॉलर आए हैं और बस एक और चेंज है। चलिए कोई बात, गुड लक। थैंक यू। असद, आप भी चेस करते अगर टॉस आता? जी बिल्कुल, यही प्लान था। हमने देखा ओवरऑल कप्तानों ने यही सोचा है, लेकिन ड्यू यहाँ कहीं नजर आई नहीं अभी तक टूर्नामेंट में। अच्छा, हमारा थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें। हमारी बॉलिंग थोड़ी सी नई है, तो मैं और कोच हमारा फैसला था कि हम अपने बॉलिंग को अंडर प्रेशर नहीं लाएं, उनको फ्री ऑफ माइंड से बॉलिंग करने दें। बैट्समैन चूँकि हमारी जो है वो एक्सपीरियंस बैट्समैन है जो कि प्रेशर को कोप कर सकते हैं, तो हम अपनी बैटिंग पे ज़्यादा रिलाई करें। ओवरऑल टूर्नामेंट में टीम की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, लेकिन जो मोमेंटम चाहिए था लास्ट मैच थोड़ा स्लिप हो गया। एज अ कप्तान कैसा देखा उस गेम को? जी, लाहौर से जो हमारा मैच था, आप उसकी बात कर रहे हैं जी। थ्रू आउट बड़ा अच्छा खेला हमने वो मैच, और जिस सिचुएशन में हम लोग आ गए थे, 5 ओवर में 35 रन चाहिए थे और हमारे बेस्ट प्लेयर जो है वो क्रीज में थे। अनफॉर्चुनेटली फिनिश नहीं हो सका, लेकिन कोई बात नहीं, यही होता है। अच्छी टीम ऐसे ही करती हैं कि वो गलतियों से सीखती हैं और उसको बेहतर करके जो है वो नेक्स्ट मैच में एज अ बेटर बैट्समैन जाते हैं। आपने भी काफी डराया हुआ है सबको, गुस्सा काफी कर रहे हैं आप। नहीं, मैं कोशिश करता हूँ कि अपने आप को कूल रखूँ, बस वो हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ हो जाता है, लेकिन वो ग्राउंड की हद तक होता है। अच्छा, कोई चेंजेस हैं टीम में? जी, हमने, क्योंकि हम जो आप जिस मैच की बात कर रहे हैं उसमें हमारा बैटिंग का थोड़ा सा कंसर्न रहा, तो हमने एक एक्स्ट्रा बैट्समैन बढ़ाया और लेफ्ट आर्म स्पिनर को कम किया। चलिए, गुड लक। थैंक यू। Okay, so the news is that Lahore Blues have won the toss. They decided to bowl first. इंटरेस्टिंग था, दोनों कप्तान पहले जो है वो बॉलिंग ही करना चाहते थे, और अगर साइड आप देखें एमर, कराची की साइड काफी फॉर्मिडेबल साइड है। जी हाँ, ये अगर आप बैटिंग की बात करें तो खुर्रम मंजूर एक्सपीरियंस, अम्माद आलम, उमैर बिन यूसुफ, वन ऑफ
Whites were completely outplayed by Peshawar region. And now it's time for Lahore Blues to start off with Khurram Manzoor. Lots of experience, lots of matches under his name, and Ahmad has looked good in this tournament, especially in the past couple of outings that he's had. Early days for him, just the 5th match. Got a 150 to his name and a bruised elbow. Kashyap also another name who's been around in the circuit for a while, from Hyderabad, but he's playing for Lahore Blues. Left arm spin to start off with. If there's one man I'd like to see with runs, it's Khurram Manzoor. He's got the talent, he's got the numbers, he's got the experience. He hasn't really, from the Pakistan Cup to now, arrived to the party. He's got starts, he hasn't really been able to go in that top gear. Ali Yunus alongside me, very quiet, very tensed after that Lahore Whites departure. And now this one is an important one. Yeah, Lahore Whites had a terrible day. The way they played cricket, I think, was pretty disappointing. But never mind, I've got another Lahore side. Looking forward for this game also, Lahore Blues in action. I'm hoping that Lahore Blues will do something in this game. Firstly, they need to wear blue t-shirts. They're wearing red. Good toss to win, I believe, for Lahore Blues, and they decided to bowl first. Different tactics, starting off with Kashyap spinner. We did see some spin in the first game. It was in the air for a while. Not a very controlled shot, just very casual away from the body. Square cut. End of the first, 1 for no loss. Few changes for Lahore Blues. Santhal, the captain, Salman Irshad, I think they're going to miss him. He's been very good with those Yorkers in the death. But this man, with the new hair color, Umaid Asif, the Iron Man, the colored Iron Man, 5 for 20, his best, 121 wickets. It suddenly reminds me of this famous stuntman from Pakistan, Sultan Golden. Only for the hair color, it doesn't look like him. Umaid Asif will be supported by Hunain Shah. Nisar Ahmed also in the side, and the fast bowler, Kashyap Bhatti, Usman Qadir. So they've got their complete bowling. Great start. We expect that from Umaid Asif. He'll keep on bowling in that line and length. Talking about Khurram Manzoor, I think he's a big match player. He will score runs when needed. We know what potential he has. But what about this line and length? Beautiful. Off the surface, just deviation. Takes Khurram by surprise. That's a big deviation to miss everything. And the bat by a margin. It's very full this time, dipping in. Nice hair color, suits him. Previous game he had all the white hair. Probably time to change it. Looks good on him. What about this delivery? Just tailing in the air. So some swing for him. Let's see what it happens when it off the surface, if he gets something. He has that potential, that skill in him. And they do need a good start. They need to get early wickets. Good call from Khurram Manzoor. He's tall, so he gets that extra bit of bounce, hits the deck hard. And he's been used around in the circuit with the new and as a first change bowler. Has featured in the PSL for a couple of franchises. Plays in the US also. He's played some T10.
So he's been around. He's just not getting his timing right. Just feel that he's not there yet. Yeah, you were talking about Sultan Golden. Here's Liaquat Golden. The different hair color. Well done for his age. That's Snow White. He's got that good line going. He's finishing it within the stumps and also keeping it around that fourth off stump. Yeah, that's what he will do. So particular with his line and length over the years. He's got that experience. As you were mentioning, he's played in PSL also. Handy cricketer to have. He can bat well too. Hit long sixes. Cracks it hard and will beat point. Yes, he does. Good timing, some power into it as well. Boundary to end the over. 7 for no loss. Yeah, wet given. Can't do that on this pitch early on. Outside the off stump, these are easy pickings for Khurram Manzoor. There was a fielder, but he hit it in the gap. What a shot down the wicket. He's played it very wide of that fielder, but no worries because it's gone way past that boundary. That has to be the shot of the tournament. Beautiful shot. Coming down the track, giving himself room over extra cover. Wow, what a shot. What a talent this boy is. Playing that shot to a left arm spinner. Some courage. Early on, look at that. Just give him some touch room. And that swing. Look at that balance also. High elbow. All the way. Fantastic shot. Shot of the tournament. He's played it with the spin. Nicely done, nicely done. Just read the length very quickly, got into a down one knee and swept it hard. His bite swing on those two boundaries he's hit has been very rapid. Pressure on Kashabati. These are easy pickings on his leg stump. Just hurried onto him and he was smart enough. Better taking the pace off, bowling it away from the batter. That's what you should looking to do. Yeah, the smile says it all. He could tell. Varied the pace. That's how you should be looking to do on this pitch. Got the gap again this time. Too much time available to cut that away. Too much time. Yeah, that's what Khurram even telling him. You can't bowl me here at this pace. Look at that. Easy pickings outside the off stump, no pace. The length also. Everything working for Khurram Manzoor. All he had to do was place it in the gap, and he did. Got the desired result. Yeah, that's, you can smile, but that was pretty average bowling by Bhatti. 3 gone, 22 for none.
It's a wide signaled. Chased it, Ahmad. It was good first over from Ahmed Asif, apart from that boundary on that last ball. Got the ball to move away. A couple of them just came in a bit. And then he's the man with the shot of the tournament for Ali Yunus. Ahmad Alam. He's a good player, no doubt about that. Baby face, the way he plays, the intent, the clarity that he has in his batting is just beautiful. Simon Toffel, to you. Zulfikar Jan, good umpire, good start to his career. Asif Yaqub, we know all about him. He's been the umpire of the year a couple of times, in fact. Shah Faisal's best friend, as you said. Yep, they have a history. They've been friends for a while. Good appreciation for each other's work. Qasim Akram, lots is expected of him as well, with the ball and bat. Usually it's not really preferred with the ball recent times. Good middle order bat, great finisher. You seem to be enjoying something a lot. What am I missing? Just sitting here next to me laughing away. Just the way you defined Shah Faisal and Asif Yaqub's friendship. Funny. Coming back to the game, Ahmed Asif, a lot depends on him. Because they're without Salman Irshad, so he'll have to do a lot of experience work, a lot of bowling in the important times, death bowling maybe. Sam Talat has a job to do. Cut away, created a length by coming down the wicket and just opened the face to play it square. Good timing. Yeah, he's fearless. Brave shot coming down the track, just gave himself a touch room. Created that line and length for himself and played it right between the two fielders. The placement was just immaculate. As I said, this boy can play. Lots of talent. Just want him to carry on and play a big one, because he's been getting starts, then losing it away. So I just want him to carry on till the end and see what happens. Good cricket, very good cricket.
That's the benefit you have as a youngster playing again alongside Khurram Manzoor. Continuously talk to him. And they can judge the single well. They trust each other, and that's what you want to see. The credit has to be given to Khurram Manzoor. Lots of experience. Hashim Ibrahim in the side. We saw him in 4-day cricket, played well. That's his debut today. We wish him all the luck. He did well in Quaid-e-Azam Trophy. Not a very beautiful looking shot on the eye, but it's just a boundary. Or maybe I'm being a little too harsh. He's hitting it hard, I can tell you that much. 4 gone, 34 for none. Yeah, great shot. As if he's created that length for himself. Khurram Manzoor, we expect that from him. He's so experienced. He knows where the bowler is going to ball. That's experience. Look at that, moving around, just going around and creating that length. It was not that short. But since he moved in the crease, so that was easy pickings for him. Boundary to end the over. 4 gone, 34 for none. हुनैन शाह कराची ब्लूज के खिलाफ फतह के हीरो गेंद करने के लिए आएंगे और एक ऐसे मौके पे जब ऑलरेडी 8.5 रन पर ओवर की औसत के साथ दोनों ओपनर्स ने रन्स का अंबार लगा दिया। कदमों का भी इस्तेमाल करें, बड़े शॉट्स खेल रहे हैं। तो आज ये दूसरा मैच है और यही रिवाज रहेगा। पहले भी ऐसे ही था नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची में। शाह फैसल, अब तक अच्छा बाउंस लग रहा है इस पिच पे, जिस पे लग रहा है कि बैट्समैन को एतबार आता जा रहा है। जी बिल्कुल, और जब पहला मैच शुरू होने से पहले विकेट पे नज़र डाली तो काफ़ी इसके बारे में वेरिड ओपिनियन थी कि ये कैसा खेलेगी, बट आई थिंक इट हैज़ बीन अ वेरी गुड क्रिकेट पिच। अभी भी हुनैन का पिछला बॉल आप देखें, 9 मैचों में 10 खिलाड़ियों को आउट कर चुके हैं, वो भी अच्छा बॉल बल्ले को जाके लगा, तो अच्छी पेस है, बाउंस भी कंसिस्टेंट हमने देखा है इस पिच पर। अंडर लाइट्स तो क्या ही बात है। गेंद हवा में उठ गई है, फील्डर अपने बाएं जानिब जा रहे हैं इसके लिए, लेकिन गेंद उनके सर के ऊपर से निकल जाएगी। कुछ लेट स्टार्ट किया था, पहुंच भी ना पाए निसार अहमद और यूं बाउंड्री पे हासिल हुई कराची को। बहुत गैर मामूली स्ट्रोक था ये अमाद आलम का, जिसे कहते हैं शॉर्ट आर्म जैब, क्योंकि बिल्कुल फॉलो थ्रू नहीं था, क्रैम्प हो गए थे एक लिहाज से ऐसा लगा। पहले बाउंड्री चेक देखें, सीधा जाके स्कर्टिंग को लगा तो ये 6 रन का इशारा होगा। निस्बतन आसान फैसला होगा अंपायर के लिए, बिल्कुल जो स्कर्टिंग की नोक होती है उसको जाकर लगा। लेकिन शॉट का भी रिप्ले देखना पड़ेगा और अंपायर अपने सेफ्टी फर्स्ट के फॉर्मूले के तहत दोबारा इसको चेक करने के लिए जाएंगे। क्लियरली चूंकि बगैर किसी पहले इम्पैक्ट के जाके बाउंड्री की स्कर्टिंग डिस्टर्ब हुई है, इस वजह से बज़ाहिर कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती। शॉट भी गैर मामूली था और दूसरी जानिब हुनैन को पहला छक्का लग गया और उसके बाद देखना होगा कि वो किस अंदाज की लेंथ के साथ उतरेंगे। कंफर्म किया है आसिफ याकूब ने अपना वक्त लेने के बाद। पावर प्ले खवातीन हज़रात, मजीद फायदा उठाएगा कराची। बहुत गैर मामूली स्ट्रोक था ये जो छक्का लगाया अम्माद आलम ने। इस टूर्नामेंट में हमने इन्हें बहुत खूबसूरत स्ट्रोक्स खेलते हुए देखा है। ये देखिए बिल्कुल भी पोजीशन में नहीं थे, लेकिन तेजी से अपने हाथों को नीचे लाया और बिल्कुल जिससे फ्लिक ऑफ द रिस्ट कहते हैं, क्योंकि कोई फॉलो थ्रू नहीं था। और जब ऐसा लगा, जब बल्ले को बॉल लगी कि शायद वो पूरा डिस्टेंस नहीं जा पाएगी, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे छोटी बाउंड्री है, 65 मीटर्स की बाउंड्री है हमारे दाएं जानिब अगर पवेलियन एंड से बॉलिंग हो रही हो।
और ये करारा जवाब है दूसरी जानिब अमाद आलम का। अगर पिछला कोई फ्लिक था, कुछ शक में मुब्तला थे, तो ये महफिल लूट लेगा चौका। खूबसूरत शॉट। क्या बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक था ये। बहुत वक्त होता है अमाद के पास, ऐसा लगता है। इस शॉट को भी देखें, पहले बॉलर की गेंद रिलीज करने के बाद उन्होंने अपने आप को रूम दिया और सिर्फ टाइम किया गेंद और बल्ले का मिलाप। एक मरतबा फिर कोई फॉलो थ्रू नहीं था। जबरदस्त स्ट्रोक। बॉलर के सर के ऊपर से एतमाद कराची के आसमान की बुलंदी से बातें कर रहे हैं। अमाद आलम का बैकअप किया पिछले चौके को, उससे भी खूबसूरत और तेज तरार शॉट के साथ। अगर आप पीएसएल के स्काउट्स हैं तो आपको ये बैटिंग मिस नहीं करनी चाहिए। बाउंड्री आफ्टर बाउंड्री, क्लास से भरपूर। अमाद आलम एक मरतबा फिर फ्रंट लेग को क्लियर किया, लेकिन अपनी शेप को नहीं खोया। अपने सर की पोजीशन को बहुत स्टिल रखा और ऐसा लगा कि बॉल उनकी नजरों से एक सेकंड के लिए भी ओझल नहीं हुई। यही तरीका है, अगर आप इम्प्रोवाइज करते हैं तो आपको अपनी नजर बॉल से नहीं हटानी होती। बॉडी को रोटेट करते हैं, हिप को थोड़ा सा ओपन करके, और सीधे बल्ले से दोनों शॉट उन्होंने खेले। पहले मिड ऑफ के बाएं जानिब और अब दाएं जानिब। जबरदस्त वेरिएशन स्ट्रोक प्ले की यहां पर अम्माद की जानिब से। एक मरतबा फिर शॉर्ट आर्म फ्लिक और अब के नहीं बच पाएंगे। फाइनली अपना रिवेंज मुकम्मल किया। अमाद आलम ने अपना इम्पैक्ट जरूर डाल दिया था शॉट्स को खेलते खेलते, लेकिन वही जो T20 क्रिकेट का खासा कि आप एक के बाद एक दूसरा लगाने की कोशिश करते हैं, इस मरतबा चूक गए। $1 मिलियन लग रहे थे। अम्माद आलम अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले आउट हो गए। सॉफ्ट डिसमिसल कहूंगा मैं इसे, क्योंकि बिल्कुल भी इस शॉट में उस तरह की इंटेंट नहीं थी जो पहले 2-3 शॉट्स में थी। यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और गुनैन शाह भी विकेट टेकर है, अच्छी फॉर्म में। फील्डर वहां मौजूद था, इसलिए ये ज्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं लिया अम्माद ने, और इसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। एक ऐसी इनिंग्स जो कि बहुत ही जबरदस्त लग रही थी, सिर्फ 28 पे खत्म हुई। 48 पर 1 कराची। उमर बिन यूसुफ ने रिप्लेस किया है नौजवान अमाद आलम को। ये भी कराची की नौजवान बैटिंग साइड का एक हिस्सा है, जो कि एक के बाद एक करके आपको ऐसे प्रोस्पेक्ट्स दे रही है जो कि किसी भी स्टेज को कवर कर सकते हैं। लेकिन अब इनकी जिम्मेदारी दो चंद हो गई है। ये टीम के वाइस कप्तान भी हैं और इसके साथ अब इनके पास वो एक्सपीरियंस भी है जो कि रिक्वायर्ड करता है कि किसी सिचुएशन को बनने के बाद वहाँ से बिखरने ना दें, जो कि इससे पहले लाहौर वाइट्स की टीम के साथ हुआ था। एक डिसेंट ओपनिंग स्टैंड और उसके बाद दूसरी विकेट की शराकत के बाद वो बिखर गए। 19 मैचेस में 40 की एवरेज है और इस टूर्नामेंट में 2 50s बना चुके हैं, जो कि इनकी करियर की कुल 4 50s में शुमार हैं। निसार अहमद गेंद करने के लिए आए और उन्होंने भी विकेट हासिल कर ली। बैक टू बैक नुकसान कराची को। कहां चले थे और कहां पे आके थम गए। सन्नाटा कराची के कैंप पे, और लाहौर एक मरतबा फिर जाग गया कराची में। हजूर मुड़ के देख रहे हैं, लगता है कि लाहौर के कुछ प्लेयर्स ने कुछ कहा उन्हें जाते जाते, लेकिन खुश नहीं है। ये भी एक सॉफ्ट डिसमिसल था। निसार जो कि बॉलिंग करने आए थे, तवील कामत हैं इस विकेट से। एक्सपेक्टेड था कि उन्हें ज्यादा बाउंस मिलेगी और उसी बाउंस को कंट्रोल करने में नाकाम रहे खुर्रम मंजूर। अंपायर्स फ्रंट फुट चेक करना चाह रहे हैं, लेकिन यहां पर कोई मसला नहीं है। अच्छे तवील कामत हैं, देखिए हाई एक्शन है उनका और बहुत थोड़ा जल्दी भी आ गया। बाउंस की निस्बत शायद पेस से डिफीट हो गए या लेंथ में खुर्रम मंजूर, लेकिन उनकी वापसी होगी 19 रन पर और कराची 48 पर 2।
इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा तवील कामत निसार का आने वाले कप्तान असद शफीक से, जो कि अब शायद उस रॉक एंड रोल एक्शन की जानिब ना जाएं जो कि ओपनिंग स्टैंड में चल रहा था, लेकिन 1.5 दहाई का एक्सपीरियंस है इनके पास। डे इन ईयर आउट 100 से ज्यादा मैचेस खेल रखे हैं और अब लीड कर रहे हैं कराची वाइट्स की टीम को। नए सिरे से बिल्ड करना पड़ेगा पार्टनरशिप को। निसार का बेहतरीन आगाज, सरप्राइज किया वहां पे खुर्रम मंजूर को, बैक टू बैक विकेट हासिल की लाहौर ब्लूज ने। और आइडियल नहीं होता, अभी पावर प्ले की वो स्टेज चल रही थी जहां पे कराची शायद पुश ऑन करता मजीद और इस पावर प्ले को अपने लिए बिल्कुल वन साइडेड बना लेता, लेकिन दोनों बैट्समैन दोनों के दरमियान सिर्फ एक ही गेंद खेली है इन्होंने, और यह आइडियल नहीं होता T20 क्रिकेट में। ये खुर्रम मंजूर का डिसमिसल थोड़े लेट हो गए और खतरनाक अंदाज से अपने आप को मुश्किल में मुब्तला करते हुए ऑलमोस्ट चौप कर बैठे थे। मजे उड़ा रहे हैं इस पिच पे निसार, सरप्राइज कर रहे हैं अपने बाउंस से बैट्समैन को, एंजॉय कर रहे हैं। बाउंस और मूवमेंट भी अकील, बॉल पड़ने के बाद तेजी से अंदर आया ऑफ द सीम, ये देखिए बैक ऑफ अ लेंथ, यहां से अंदर आया। असद शफीक शेप कर रहे थे इसे ऑफ साइड पे खेलने के लिए, ज्यादा रूम तो वैसे ही नहीं था, लेकिन जो इनवर्ड मूवमेंट थी उसने बिल्कुल सरप्राइज किया। और ऐसा आसानी से हो सकता था कि अगर किस्मत अच्छी ना होती तो इनसाइड एज लग के विकेटों पे लग सकता था। बचत हुई यहां असद की। अब तक शानदार ओवर जारी था और शायद ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट ना करे। उमर बिन यूसुफ भी अपना वक्त लेंगे सेटल होने के लिए। विकेट के साथ शुरुआत की है और उसके बाद बैक टू बैक डॉट डिलीवरीज 50 मुकम्मल हो गए इस वाइड के साथ, और भागकर रन भी हासिल किया कराची ने। ये दो बैक टू बैक विकेट्स हैं जो कि इससे पहले बाउंड्रीज पे बाउंड्रीज लगा चुके थे, लेकिन फ्लिक कर बैठे और यहाँ पर सरप्राइज किया अपनी पहली गेंद पर। शायद खुर्रम ने भी जल्दी की आने वाले बॉलर के खिलाफ, राइट फ्रॉम द गेट गो अटैक करने की कोशिश और उसी में चूक गए। निसार का जो रन अप है उससे आपको आइडिया होता नहीं कि ये शायद इतने तेज बॉल करें, लेकिन कंधा जो है अच्छा इस्तेमाल करते हैं। टेल अप लाहौर की, क्या खूबसूरत फील्डिंग का मुजाहरा किया। कासिम अकरम बहुत ही लाजवाब फील्डर हैं और स्पेशलाइज करते हैं इस बैकवर्ड पॉइंट की पोजीशन पे। अपने टीम मेट से दाद वसूल की, जोरदार कट शॉट था, हवा में उड़ते हुए इसे रोक लिया अपने बाएं जाने कासिम अकरम ने। पहला गेंद आया जो बल्ले के बीचों बीच से उमैर के लगा, इससे उन्हें कॉन्फिडेंस जरूर मिलेगा, रन्स तो नहीं मिले। तो मुसलसल बीट हो रहे हैं कराची के खिलाड़ी ऐसे स्टार्ट के बाद। हालांकि एक बेहतर सोच हो सकती थी कि कम से कम इनके इस ओवर को गुजारें। विकेट हासिल किया, पिछले ओवर में भी कामयाबी मिली है, लेकिन पावर प्ले अभी भी बुरा कंसिडर नहीं करेंगे। गो के इनके दोनों ओपनर्स वापस जा चुके हैं, लेकिन T20 में अगर आप इस औसत के साथ रन बना रहे हैं कोई 8.5 से बेहतर की, तो इस पर बिल्ड कर सकते हैं। शाफा साहब बिल्कुल कर सकते हैं, दोनों ही अच्छे प्लेयर्स हैं। तो उमैर मिस आउट करके लास्ट बॉल अपॉर्चुनिटी थी, लेग स्टंप हाफ वॉली, लेकिन चूक गए उसे खेलने में। फिर क्विक सिंगल, लेकिन शानदार ओवर मुकम्मल किया निसार ने। पहली गेंद पर विकेट और उसके बाद भी बांध के रखा। पावर प्ले अपने इख्तिताम को पहुंचा 52 पे 2। अब डिसेंट स्टार्ट मिले हैं कराची वाइट्स की टीम को। शाह फैसल जहां पर इन्होंने बेस्ट बनाया था लाहौर ब्लूज के खिलाफ, लेकिन आखिर में जाकर वो उस मुकाबले को हारे। 63 पे 1 इन्होंने बनाए थे वहां पे जब ये इसी स्टेडियम में मैच खेल रहे थे। आसिफ याकूब कंफर्म कर रहे हैं कि अब आप फील्ड रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर सकते हैं। उसके साथ डेरा मुराद जुमाली के खिलाफ इन्होंने 58 रन बनाए खिलाड़ी के नुकसान पर। हैदराबाद के खिलाफ 51, इस्लामाबाद के खिलाफ इनका वीकेस्ट था, 38 बना पाए थे 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। और ये प्रेशर वाला गेम भी है, गो के लाहौर की इस साइड के पास वो फायर पावर है, स्पेशली हुनैन की सूरत में, जो कि इनको दबाव में डाल सकती है। लेकिन इब्तदाई बॉलिंग में तजर्बाकार काशिफ भट्टी उमैद आसिफ को आड़े हाथों लिया था और उसके बाद बिल्ड कर सकते हैं इस आगाज पे। से पहले डिरेल होते हुए हमने नोट किया है कराची को, जो कि एक पॉइंट जरूर होगा जो कि आने वाले खिलाड़ियों का मद्देनजर रखना पड़ेगा। कराची ने हालांकि आज एक बैटर को ऐड किया है अपनी टीम में, लेकिन फिर भी इनकी बैटिंग लाइनअप बहुत ज्यादा डीप नहीं है। सोहेल खान नंबर 8 पे आ रहे हैं खेलने के लिए। पिछले मैच में सोहेल खान नंबर 7 पे खेलने आए थे और यही वो मैच था जिसका आप जिक्र कर रहे थे
कि अच्छे आगाज़ के बावजूद वो आखिर में अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सके। तो यहाँ ये पार्टनरशिप बहुत क्रूशल है। और उसके बाद आज़म खान का रोल, क्योंकि दानिश अजीज़ भी फॉर्म में नहीं रहे इस टूर्नामेंट में, तो ये एक क्रूशल लम्हा है इस मैच का। अगर यहाँ पे हुनैन ब्रेक थ्रू दिलाते हैं लाहौर ब्लूज़ को तो उनकी टीम का पल्ला भारी हो जाएगा। असद शफीक एक थिंकिंग हेड रखते हैं अपने शोल्डर पे, बड़े कूल और काम रहते हैं, और तो बल्कि के वो बहुत ज़्यादा एक्शन पैक इनिंग्स नहीं खेलते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमने जो स्ट्राइक रोटेट करने के लिए जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है वो करते हुए देखा है। और कराची के लिए ये बेहतर हो सकता है कि वो कम से कम अपने साथ नौजवान खिलाड़ी को खिलाते रहें, क्योंकि वो जो गियर चेंज करने का काम होता है वो बड़ा खाल खाल देखें हमने अब तक इस टूर्नामेंट में। और शायद T20 में इतना वक्त भी मौजूद नहीं होता कि आप इसमें अपने आप को एडजस्ट कर सकें। तो यूँ जो सिचुएशन मिली है उसको शायद दरमियान के चंद ओवर्स में सर झुका के दोबारा से विकेट्स को हाथ में रखते हुए अटैक में फायदा उठा सकते हैं। दैट्स द शॉर्ट आर्म फ्लिक, और उमैर बिन यूसुफ को हाथ खोलने का मौका मिल गया, इंतजार किया, आने दिया, और अपने पहला छक्का हासिल किया है। पहले रन्स भी हैं उमैर के। लाजवाब स्ट्रोक था। पिछले ओवर में चूक गए थे एक लेग स्टंप हाफ वॉली को डिपॉजिट करने में, लेकिन इस मरतबा थोड़ी लेंथ मिल गई थी, शायद इस वजह से वो गेंद के नीचे गए, बॉटम हैंड का इस्तेमाल किया और 6 रन हासिल किए। वही छोटी बाउंड्री है उसका फायदा उठाया। और हुनैन को अपनी लाइन पे गौर करना होगा उमैर के खिलाफ। और कैच आउट, हुनैन ऑन फायर। कहां जा रही थी कराची की इनिंग्स और कहां से आके डिरेल कर दिया उन्होंने। आन की आन में उमैर बिन यूसुफ ने इस शॉर्ट डिलीवरी को ऊंचा खेलने की कोशिश की, लेकिन वो भी पकड़े गए। हुनैन ऑन फायर। एक मरतबा फिर शॉर्ट पिच बॉलिंग कराची की बैटिंग लाइनअप को ट्रबल देते हुए उमैर बिन यूसुफ। पिछला छक्का भी उन्होंने लगाया, तो जब फ्रंट फुट निकालते हैं बाहर तो उसी पे वेट ट्रांसफर करते हैं। यहाँ निसार हुनैन रादर बच निकलेंगे क्योंकि ये एक लीगल डिलीवरी है, लेकिन फ्रंट फुट से ही पुल करने चले गए, अपना वेट ट्रांसफर नहीं किया जिसे ट्रेडिशनल बैक एंड अक्रॉस कहते हैं पुल के लिए, और वहीं पे वो पकड़े गए क्योंकि बाउंस थोड़ा ज्यादा था, बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सके। 6 एंड आउट फॉर उमैर बिन यूसुफ। 59 for 3 कराची। दानिश अजीज नए आने वाले खिलाड़ी। कराची की टीम काफी मायूस होगी। 3 सॉफ्ट डिसमिसल्स और तीनों बेहतरीन प्लेयर, लाजवाब प्लेयर्स। दानिश पे जिम्मेदारी आ गई है। 748 रन, 24.9 की एवरेज, 72 नॉट आउट इनका हाईएस्ट, 3 सेंचुरियां, और इन पे भी बड़ा स्कोर ड्यू है। मुसलसल कराची की मैनेजमेंट ने इन पे ट्रस्ट किया है, सीनियर प्लेयर हैं और यही वो स्टेज है जहां उन्हें डिलीवर करना है। अच्छी हिकमत अमली। हुसैन तलत की एक स्लिप के साथ आ गए हैं दानिश के खिलाफ। स्क्वायर लेग पे भी फील्डर डीप है। दानिश के खिलाफ भी शॉर्ट पिच बॉलिंग ज्यादा बुरा हरबा नहीं है, लेकिन स्लिप रख के उन्हें डबल माइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अच्छी क्रिकेट है लाहौर की जानिब से। डिलाइटफुल नज़ारा है ये हुनैन का गेंद करने के लिए आने का। इनका दूसरा सीजन है और इस मरतबा पूरे सीजन में इन्वॉल्व रहे हैं हुनैन, और इन्होंने हम कह सकते हैं कि अपनी आमद का पूरा ऐलान किया है। छक्का कंसीड करने के बाद शॉर्ट बॉल करने से नहीं चूके, लेकिन वहीं से इसको पुल करने के लिए चले गए थे। और निसार को आप कहाँ छुपा सकते हैं, बल्कि ज़रूरत भी क्या है। पिछले ओवर में विकेट हासिल की और अब उन्होंने कैच मुकम्मल किया है। शानदार बॉलिंग का मुजाहरा हुनैन ने, गो के छक्का कंसीड किया, लेकिन आउटराइट पेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक मरतबा फिर हवा में खेलने के लिए गए थे। दानिश अजीज के पहले रन हैं, दूसरे के लिए भी वापस आ जाएंगे। ऑफ द मार्क दानिश, लेकिन कामयाब ओवर हुनैन का मुकम्मल। 61 पे 3।
Front on is good. Just want to highlight it. अच्छा ओवर किया हुनैन ने, प्रेशर बनाए रखा। दानिश अजीज के खिलाफ उनकी हिकमत अमली अच्छी थी, लेकिन अब निसार आ गए हैं। और जो पिछले ओवर की आखिरी बॉल थी, एक मरतबा फिर अगर आप देखें तो दानिश अजीज ने भी फ्रंट फुट पे ही पुल शॉट किया। ज्यादा कन्विंसिंग शॉट नहीं था, हवा में थी बॉल और ट्रबल हुई है इन्हें शॉर्ट पिच बॉलिंग पे। तवील कामत है, इसलिए थोड़ा सा बॉल इतना बाउंस हुआ कि जिसको मुश्किल मैनेज जरूर कर सके। थोड़ा सा ऊंचा बाउंसर हो तो उन्हें भी मुश्किल हो सकती है यहाँ पर। असद शफीक को भी उठाकर खेलने के लिए जाने का शौक चढ़ा और उन्होंने भी अपनी विकेट गंवा दी। हाशिम इब्राहिम के महफूज हाथों में गेंद चली गई और कराची ताश के पत्तों की मानद बिखर रहे। कहां थे निसार अहमद? जाहिर है सलमान इरशाद के जाने के बाद उन्हें मौका मिला और ये तस्वीर आपको बता रही है कि कराची की सिचुएशन इस वक्त क्या है। कप्तान असद शफीक भी शॉर्ट पिच बॉलिंग का निशाना बन गए। जो स्टीपलिंग बाउंस है और निसार का ऊंचा कद, एक मरतबा फिर आप देखिए, ये तो आप फ्रंट फुट के लिए देख रहे हैं, लेकिन अगर रिलीज पॉइंट भी देखें तो काफी ऊपर से है उनका और इस विकेट से अच्छा बाउंस। एक मरतबा फिर असद शफीक तंग हुए इस बाउंस से, कंट्रोल नहीं कर सके। हाशिम इब्राहिम का आसान कैच और लाहौर राइट ऑन टॉप थैंक्स टू निसार, जिन्होंने बहुत ही जबरदस्त स्पेल किया है। 3 विकेटें हासिल कर चुके हैं अभी तक। असद शफीक बनाए 2 रन, 61 पर 4 कराची। जो क्राउड मौजूद है वो के तादाद में बड़ा कम है, लेकिन उन्होंने अपने शोर के ज़रिए से लोकल बॉय आज़म की आमद का ऐलान किया है। लेकिन एक बड़ा सफ़र तय करना आज़म को, गो कि उन्होंने जो पिछला मैच यहाँ पे खेला था वहाँ पे मुश्किल वक्त गुजार चुके थे, लेकिन इन दी एंड जिस फिनिशिंग टच की ज़रूरत थी वो प्रोवाइड ना कर सके। और वो जो विनिंग स्ट्रोक खेलने का मज़ा होता है ना, वो सिर्फ इनके हाथ से गया बल्कि इनकी टीम भी वो मैच हारी थी, उनके जहन में कहीं ना कहीं ज़रूर मौजूद होगा। क्वालिफाई ज़रूर कर लिया है, अब बड़ा तजर्बा है जवां उम्र में इनको मिल चुका है। 130 मैचेस का 142 का रिमार्केबल स्ट्राइक रेट, 100 भी इन्होंने फेमसली बना रखी है। लेकिन दूसरी जानिब है निसार, जो जिस चीज़ को छू रहे हैं सोना बन रही है, बाउंस का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। और पहली गेंद पर एक मरतबा फिर बाउंस ने सरप्राइज तो किया आज़म को, लेकिन गेंद चौके के लिए रवाना हो जाएगी। आज़म और कराची दोनों हाथों से ग्रैब करेंगे इन 4 रन को। जी जरूर रन आए चाहे जैसे भी आए, लेकिन एक मरतबा फिर बाउंस ने परेशान किया। दूसरी स्लिप अगर होती तो वहां के करीब से बॉल गई, लेकिन जाहिर है T20 क्रिकेट है, आज़म की रेपुटेशन और थर्ड मैन के बराबर से निकल गई। ये निसार का बाउंस और पेस जो है वो काफी तंग कर रहा है कराची के बैटर्स को। रेगुलेशन फील्ड है, कोई चेंज फील्ड में की नहीं हुसैन तलत ने। मोरल ऑफ द स्टोरी इस ओवर का और निसार का अब तक होगा शाह फैसल के आप अपनी अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार रहें। सलमान इरशाद की अदम मौजूदगी में निसार को प्लेइंग 11 में जगह बनाने का मौका मिला और एक ऐसे मौके पर ये गेंद करने के लिए आए थे जब 2 एक्सपीरियंस बॉलर काशिफ भट्टी और उमैद आसिफ दोनों को आड़े हाथों लिया था कराची ने। लेकिन उसके बाद एक तरफ से हुनैन और दूसरी तरफ से ये निसार का पेस है जिस कराची को बांध के रख दिया अचानक। दूसरी जानब इसी अंदाज की पिच थी जिसपे बड़े अच्छे अंदाज से राइट करके हारिस और साहबजादा फरहान शॉट्स खेलने के लिए जा रहे थे, तो या तो कुछ ज़्यादा जल्दी किया है कराची ने या फिर उस तरह से वो इतमाद के साथ बाउंस का मुजाहरा मुकाबला नहीं कर सके। जो चारों बैटर्स आउट हुए वो शॉर्ट पिच डिलीवरी पे थे और सिवाय अमाद के जो थोड़ा बैक ऑफ अ लेंथ बॉल था, लेकिन फ्रंट फुट पर आ जाते हैं पहले ही। तमाम ही कराची के बैटर्स जो आउट हुए ये फ्रंट फुट पर आ जाते हैं और वहीं से फिर वेट ट्रांसफर नहीं कर पाते और इसीलिए शॉर्ट पिच और चढ़ती हुई गेंदों पर वो कंट्रोल नहीं कर सके अपने स्ट्रोक्स और आसान कैचेस पकड़ाते गए एक के बाद एक करके। वो भी ऐसी शॉट्स लगाने के बाद जब बाउंड्रीज हासिल हो चुकी हों या सेट बैट्समैन हो, ये उनके जहन में कहीं ना कहीं जरूर मौजूद रहेगा। ज्यादा जल्दी फ्रंट फुट पे शायद कराची वाले ज्यादा जल्दी में रहते हैं, लेकिन कीमती चौका हासिल किया है। ओवर का दूसरा ये कॉन्फिडेंस स्ट्रोक दानिश का और पहला चौका। दानिश से ऐसी बैटिंग की जरूरत होगी कराची को, जैसे मैंने कहा उन पे काफी फेथ किया सेलेक्टर्स ने और उनको रीपे करना होगा।
थोड़ी सी विड्थ उन्हें मिल गई थी जिसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। फास्ट हैंड्स थ्रू द बॉल और एक मरतबा फिर यहाँ पे आप स्ट्रोक्स ऐसे खेल सकते हैं, इतना पेस और बाउंस है। बिहाइंड स्क्वायर ये बॉल गया, बाउंड्री के बाहर 4 रन। शाबाश शाबाश मान भाई। सर लेग स्टंप पे। थैंक यू। शाबाश मान भाई। Bowling change, Usman Qadir has now been brought into the attack. Be interesting to see if he gets some turn out here, because he's the one who bowls with a flight compared to modern day T20 leg spinners who are flatter and quicker. Karachi has really been off color in terms of shot selection today. Good start, shabash shabash shabash. Yes, Usman Qadir will be important because he is a wicket-taking bowler. Bowls conventional leg spinners and gets the turn and bounce. And if he gets it right, he could be the difference. Although the fast bowlers have brought Lahore back in the game. It was a good start from Karachi earlier on, but then the short pitch barrage, the short ball has done the trick for Lahore. And Karachi batters seem to struggle against the short pitch bowling tonight. Not the short pitch from Usman. That won't trouble them. Just looking at the progress, first 5 overs, 48 runs and 1 wicket Karachi. And then the next 3 overs, 22 runs and 3 wickets. Can we see the form in real time? Even in this format, it is very essential that you keep your cool head. Yes, you've got a good start, 48 of the first 5 for the loss of 1 wicket. You need to be sensible. Umair bin Yusuf just struck a beautiful 6, and the next ball, he was trying to pull something he wasn't comfortable with. And then the same happened with Arslan Shafiq hitting the bottom of the bat. Again, someone getting out to a short pitch ball. Sometimes, as a batter, you need to pick and choose the time as well, not only the delivery, the time when you really need to go after or not. 9 gone, 71 for 4. Fine evenings here in Karachi. I've always loved the winter evenings and a hot cup of tea, Tapal tea moment in the Tapal Tea Lounge. Yeah, I totally agree. And if you see those 2 dismissals of Umair bin Yusuf and Arslan Shafiq also, they're trying to pull the ball from outside the off stump, and it's above their eye line. When it's above your eye line, it's very tough to control the shot then. Well, it seems like they made up their mind that they will go after it when the ball wasn't there to hit. Have a look at these. This is Ahmad. Chips it, but doesn't really complete the shot. He's been playing some funny shots. This one. Well, one common thing in all the 3 dismissals that we just saw on the short ball was no extension of the arms. They did not have the time to open up their arms. And if you can see that again, and I think you will find out the proper technique of playing a pull stroke is definitely you have to extend your arms. And then both or all 3 of those results might have been different.
Yeah, I agree with you in the point you're making, and especially when you talk about Khurram Manzoor, he got some boundaries going, but he wasn't looking good on the eye. It was just fast hands were working for him. And he was trying to drag and play everything in the cow corner region, or sweeping it. He's not been timing it. Looked a bit off color. And they're overthrows now. Yes, some fielding which isn't required by Lahore. An unnecessary throw. The fielder was already late, so even he had hit the stumps, it seemed as if it would not have bothered any of the batters. So the result of the overthrow, couple of runs to the Karachi side, who are under pressure. Two new batters, Danish and Azam. They need to develop a partnership. Shot timing as well played by Danish Aziz. Not only the timing but also the placement. $79 for 4, you take it in 9.4, you're going almost 8 and over. That's fine, the scores. It's the wickets column they need to control. Yes, the wickets column is the place where the damage is seen. 4 wickets down already, and this pair has a lot to do. They have to develop a partnership and at the same time keep the run rate going. It is good for now. You remember not so long ago, it was this pair who needed 35 of 30 balls against the same side. And they lost the match. Well, they will have that in mind, and also that Salman Irshad isn't there. He's someone who is brilliant at the death bowling, bowls Yorkers at will, and he also gets the ball to tail back in. And the action that he possesses is not an easy one for the batters to pick. So that is a place where they will be relieved, but they have a different challenge tonight. Nisar took 2 wickets and he bowled brilliantly. They weren't comfortable against his short pitch bowling. Now is the time. Hussain Talat is somebody who bowls medium pace and can be handy, but can also spray around and give the opportunities to score. 10 gone, 81 for 4 Karachi. While we're just having a bit of a break, you were making a point about the 2 short balls, Umair bin Yusuf and Asad Shafiq, the way, what went wrong? Why couldn't they control it? Let's have a look at that. There you see these arms not extended at all. And if you can stop there at the point of contact, we'll be able to see it perfectly. Once again, arms not extending, probably not having the time to make the proper adjustment to play a full stroke. I wonder if the replays can be stopped at the point of contact. That will make it very easy for the viewers to understand what we are trying to say. Oh, that's cramped him up for space. First, when he tried to come out, he bowled him the wrong one. And now, the leg spinner that came in sharp.
That is wonderful bowling. The leg spinner bouncing and spinning. And that is Usman Qadir's speciality. And this next one was a googly, which the batter definitely picked it up, but played it straight to covers. This one again, another dot. So 9 deliveries so far, 1.5 over from Usman, and he's only given away 1 run. And that is good bowling. 10 balls actually. 9 dots. Just bowled by Usman. Have you noticed something about him? In earlier days when he came, he was a little slow in his run-up. He would take his time, and now he's more Imran Tahirish type. With his medium pace run-up, almost gathers some momentum. Spends a lot of time with him, yes, during PSL, but it's a lot of similarity when you look at Usman Qadir and you try to visualize Imran Tahir. Yes, he has quickened up in the run-up. There we see that. Those last 3-4 steps, and this one has been cut and well fielded. Hashim Ibrahim there at short third, making the save, and I think he's saved 3 runs to his team. So 2 overs gone, 3 given by Usman, and 83 for 4 after 11. Projected shows 151 wouldn't be enough in the circumstances of what we've seen, what this pitch can do second time around. You say maybe settle somewhere between over 9 and 11 and over. So you say 170s would be nice, but that'd be pushing it really. 83 and 11. Captain himself. First over went for 10. Yes, very important these overs for both teams. How Lahore can manage to control and maybe pick up another wicket will be icing on the cake for them. And as far as Karachi are concerned, no more wickets please. Because if they want to make this game interesting, this partnership has to go till the 17th over at least. Because I don't see any firepower after them. And both these boys can go big. They have the ability to hit big sixes and develop a good partnership, which Karachi is in dire need of. Again, that short ball, but this time more in control, angling the bat towards the ground. Sikandar, I think maybe this pitch has something to do with the batters not being able to cope with the short delivery that easily, because it seems as if the ball has arrived sooner than they have anticipated. And that's why they have been cramped up and haven't been able to open their arms. That may be one of the reasons. And the batting card looks pretty sorry after the early start. Ahmad Alam was looking wonderful when he got out on 28, and after that, no real partnerships. Giving the charge. I think there has to be a game plan between the two batters out there. If one is going on the offense, the other one needs to make sure he gives him more strike. Both go on offense unless they're in supreme form, then it might be chaos. And especially talking about Nisar Ahmed, it's his first game for Lahore this season. He is slippery actually. He is quicker than you think, because he uses his wrist at the very last moment. If he can show his wrist, people will have a fair idea what kind of a release he presents. And that is why the batters get cramped up. Well driven, but straight to the covers. And Imran Butt over there fumbles a bit, but no serious damage done. In fact, nothing. That was a bad ball and a very nicely angled away behind point by Azam Khan.
boundary to almost the end of the over. It's just one more ball to go. It was a poor ball, full and wide outside off, and then Azam Khan did the rest. No real effort required, just the face of the bat opening up, allowing the ball to go through the gap. Wonderful stroke, a sensible one. I'll have to bowl that again. It's a good thing to see about Azam Khan that he's not completely relying only on brute force. This was smart. It was away, full. All he had to do is just show it the angle bat. Yes, I like that comment from you. The smart stuff that is also required, and especially in situations like these. Brute force is not the only way to get through. And for him, he also needs to put up a good show, a bigger performance. We have seen his 20s and 25s, but he needs to do more. Just to one there. 12 gone, 91 for 4. एक्शन से भरपूर शुरुआत के बाद आज आजम की लॉन्जेविटी का इनिंग्स कितना लेके जाते हैं उसका इम्तिहान, जबकि दानिश ने भी अब तक अच्छा साथ निभाया है। अगर ओपनिंग पार्टनरशिप के हिसाब से चलते तो इस वक्त कराची कम से कम 20 रन आगे होता था, लेकिन T20 क्रिकेट का खासा कि महज एक ओवर या चंद गेंदें हैं पूरा कांसा पलट सकती हैं। और ये सिचुएशन ख़ास तौर पर बैटिंग साइड के लिए अहमद जो कि अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, 3 अच्छे शॉट्स इनको एक मरतबा फिर ड्राइविंग सीट में लेके जा सकते हैं। और आज़म के लिए जो कि नौजवान भी हैं और उसके साथ साथ अपने आप को प्रूव भी करना चाहते हैं, एक अच्छा मौका है। दूसरी जानिब उस्मान कादिर, शानदार बॉलिंग, 3 रन दिए महज। बड़ी वाइड कर दी। उस्मान कादिर ने अपने करियर की इब्तिदा में बड़ी कामयाबी हासिल की थी, लेकिन उसके बाद शायद ज़रूरत से ज़्यादा उन्होंने रॉन्ग वन का इस्तेमाल करना शुरू किया, जो कि पकड़े गए, क्योंकि अदरवाइज ये इब्तिदा में कामयाबी की ज़मानत समझे जा रहे थे। क्या कुछ आउट ऑफ फॉर्म बीच में रहे, जो कि होता है, बैट्समैन और बॉलर्स दोनों पे एक फेज आता है, लेकिन बॉलर्स और बैटर्स दोनों का काम ये होता है कि वो अपनी मेहनत जारी रखें और उस फेज से निकलें। ऊंचा खेलने के लिए गए, पावर दी है, अपने बाएं जानिब जा रहे हैं, लेकिन उनके सर के ऊपर से चला जाएगा। आजम ने पहला छक्का हासिल किया, रीड किया गेंद को और अपनी जालिमाना फोर्स का पूरा इस्तेमाल किया पहले छक्के के लिए। बहुत अच्छा शॉट, थोड़ी सी एयर उस्मान ने बॉल में थोड़ी सी ज्यादा दी थी इस बार, और फौरन पिक किया अपॉर्चुनिटी को और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से सूरज शॉट। और अब ऑन साइड पे गए हैं और उससे भी ज्यादा पावरफुल बैक टू बैक छक्के, और स्टाइल में कराची ने ट्रिपल फिगर्स को हासिल कर लिए। अगर डगर से उतरी थी तो दोबारा मोटरवे पे चढ़ चुकी है कराची छक्कों की बदौलत। ये खतरनाक अंदाज है आजम खान का, जिसके लिए ये जाने जाते हैं, और जब वो इस तरह के मूड में आ जाएं और इस तरह की रिदम में आ जाएं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है बॉल बचाना इनसे। फ्लाइटेड बॉल करने की कोशिश की उस्मान ने, एक्स्ट्रा कवर पे छक्का मारा, थोड़ी तेज कराई तो सीधा छक्का मार दिया। बड़ी कम ऑप्शन रह जाती है बॉलर्स के पास जब आजम खान इस मूड में आ जाए। इसको तीसरा छक्का लगाना चाहते थे, ये खतरनाक है। फील्डर अपने बाएं जानिब जा रहे हैं, लेकिन उनके बीच में गिर गई और किस्मत के धनी शोमई किस्मत उस्मान कादिर, गेंद हवा में भी गई लेकिन फील्डर के करीब न जा सकी। और दूसरी जानिब कराची ने फिर धड़कना शुरू किया है नेशनल बैंक स्टेडियम में, इस मरतबा चौका। फील आप इसको खुशकिस्मती कह रहे हैं, मेरे हिसाब से तो बहुत शानदार प्लेसमेंट आजम खान ने इस पर की है, दोनों फील्डर्स को बाइसेक्ट करते हुए। ये देखिए
और खूबसूरत शॉट मैं तो कहूँगा, और मेरिट पे खेल रहे हैं बॉल, बिल्कुल चांस नहीं दे रहे हैं किसी भी तरह का। मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बैटिंग, ये वो बैटिंग है जो आजम खान से एक्सपेक्ट भी हम करते हैं। और न सिर्फ वो आज ये दिखा रहे हैं कि ना सिर्फ वो सिर्फ शॉट्स मार सकते हैं, बल्कि रीबिल्डिंग फेज में अगर कभी टीम आ जाए तो उसमें भी एक किरदार अदा कर सकते हैं। And once again जोरदार अंदाज से खेले, लेकिन इस पर दबाव फील्डर की जानिब। बिल्कुल जो शॉट्स उन्होंने खेले वो लाजवाब थे, लेकिन आमतौर पे जो अम्माद के साथ हुआ है, क्या एक या दो बड़े शॉट्स के बाद अचानक से एक्साइटमेंट में आ जाते हैं, और यही इनकी नौजवानी का इम्तहान है। अम्माद के लिए ज़्यादा मौके मौजूद थे, इनिंग्स की इब्तिदा में थे, लेकिन शायद अब आजम के लिए वक्त कम से कम होता जा रहा है। क्राउड उनको बैक कर रहा है, बड़ा अच्छा मौका है इनके लिए प्रूफ करने का अपने आप को, खासतौर पर स्पिनर के खिलाफ। ठीक है ठीक है ठीक है। कहाँ 2 ओवर में 3 रन दिए थे उस्मान ने, और अब 3 में 22 दे दिए, 110 पे 4। 19 रन का ओवर, और T20 क्रिकेट में ये हो सकता है बॉलर के साथ किसी भी वक्त, और ख़ास तौर पे जब आजम खान जैसे धुएंधार बैट्समैन सामने खेल रहे हो तो किसी वक्त भी मुमकिन है ये इनके छक्के और ये चौका। और कैप में बहुत ही शानदार बैटिंग इस वक्त आजम खान कर रहे हैं। दानिश उनका साथ दे रहे हैं 17 रन पे। लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन में ही मेरे ख्याल से बॉलर्स को थोड़ी सी मुश्किल हो रही होगी, लेकिन आजम खान जो है वो अमूमन बॉलर्स को इस तरह की मुश्किलात में डालते हैं और इस तरह का प्रेशर उन पर डालते हैं कि वो गलतियां करें। 50 के दहाने में पहुंच गई ये पार्टनरशिप। उमैद आसिफ जो कि जब बॉलिंग कर रहे थे उस वक्त बैक एंड पे चला गया था लाहौर, लेकिन उसके बाद रिमार्केबल कमबैक किया हुनैन और निसार अहमद ने मुश्तरका एफर्ट से 2 ओवर में 3 रन दिए उस्मान कादिर ने। लेकिन अब एक मरतबा फिर ये ऐसे मौके पे गेंद करने के लिए आए हैं जब रन रेट 8.5 रन पर ओवर तक पहुंच चुका है। कर्टेसी दिस मास्टर ब्लास्टर बैटिंग बाय आजम। तीसरा ओवर करने के लिए आ रहे हैं। गेंद को गैप में खेलने की कोशिश की है, बड़ा गैप है और उसको एक्सप्लॉइट कर लिया। दानिश ने भी हौसला पकड़ा है अपने साथी की बैटिंग से, खूब गैप निकाला 4 रन के लिए। बहुत अच्छा शॉट दानिश का। बॉल थोड़ा सा स्लो आया उनकी एक्सपेक्टेशन से, लेकिन उन्होंने रोल की अपनी रिस्ट बॉल के ऊपर और उसको प्लेस किया स्क्वायर लेग के फील्डर के लेफ्ट साइड पे, ताकि ये देखिए रोल की रिस्ट और बहुत अच्छी प्लेसमेंट, 4 रन हासिल किए। दानिश पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल T20 खेल चुके हैं। 50 पार्टनरशिप भी इनकी हो चुकी है आजम के साथ, जहां पर इनको मौका मिला था हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ उतरने का, लेकिन उस तमाम बैकिंग के बावजूद जो कि इनको डोमेस्टिक क्रिकेट में खासतौर पर लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल करते हुए मिली थी। अच्छी गेंद, शानदार डिलीवरी के साथ कमबैक किया। वहां पे वो तवक्कात पे पूरे नहीं उतर सके और उसके बाद से इनका जो PSL का सफर भी उतना ज़्यादा परवान नहीं चढ़ पाया। अबू धाबी में इन्होंने एक यादगार इनिंग्स खेली थी, हल्के फुल्के से हैं, अपने कदमों का इस्तेमाल करते हैं ख़ासतौर पर डेथ ओवर्स में। वो जब ग्रेजुएशन हासिल करके इंटरनेशनल साइड पे गए थे तो इस शोहरत के हामिल थे कि वो फिनिश बड़ा अच्छा करते हैं, और ये उन्होंने उस सीज़न में पाकिस्तान कप में करके भी दिखाया था। लेकिन आज एक मरतबा फिर एक मुख्तलिफ नौयत में जल्द उनको आना पड़ा है और अच्छी इनिंग्स खेली अब तक। खतरनाक था, उम्मीद आसिफ लंबे कद काट के हैं, लेकिन दिल हलक में आया होगा उनके दाएं हाथ से गेंद पास से निकली, और अच्छा हुआ कि दानिश ने चौके के बाद स्ट्राइक को रोटेट किया। एक नया रोल आजम खान के लिए। दानिश तो हम जानते ही हैं कि कंसोलिडेशन की जहां ज़रूरत पड़ती है वो उसको करते हैं, और फिनिश जैसा आपने कहा कि फिर बहुत अच्छा करने की महारत रखते हैं वो। आजम खान के लिए भी आज बड़ा अच्छा मौका है कि वो ये रोल प्ले करे। कंसोलिडेशन की है उन्होंने आज, बहुत शानदार बैटिंग, बड़ी समझदारी के साथ, जब 4 विकेटें गिर गई थी कराची की एक बहुत अच्छे स्टार्ट के बाद। लेकिन अच्छी बात यह है कि आजम की बैटिंग के साथ मोमेंटम को कभी टूटने नहीं देते वो, और यही उन्होंने किया है। जहां उनको मौका मिला उन्होंने बाउंड्रीज लगाई। थर्ड मैन पर फील्डर लिया था, अच्छी शॉट खेली है। आजम ने गैर ज़रूरी एक्साइटमेंट का मुजाहरा नहीं किया, हालांकि मिड विकेट का रीजन पूरा खाली छोड़ा था, लेकिन वो जो इम्प्रोवाइज करने वाला काम हमने पिछले मैच में भी खाल देखा, और इसके साथ ही इन बैट्समैन को वो प्योर जो ट्रेडिशनल शॉट्स के साथ अपने रन्स हासिल करते हुए देखा है।
जहां पर गैर ज़रूरी एक्साइटमेंट दिखाई, फ्रंट फुट से पुल करने के लिए गए, वहां पर पकड़े गए, लेकिन उसके बाद से एक रिमार्केबल फाइट बैक करती हुई ये पार्टनरशिप, रियर गार्ड एक्शन दिखाया और अब एक मरतबा फिर ड्राइविंग सीट में आ रहा है कराची। बाउंस में बीट किया, दानिश एक मरतबा फिर इस गेंद की लेंथ में चूक गए, ऊंचा खेलना चाहते थे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस आज जो है वो तमाम बैट्समैन को तंग कर रहा है। दो बैट्समैन हमने देखे कि वो शॉर्ट बॉल पे आउट भी हुए, पुल मारते हुए, बॉल बहुत तेज आया और ये भी देखें थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस। कीपर ने तकरीबन अपने सर के पास इस बॉल को पकड़ा है। आई एम श्योर सोहेल खान बड़े गौर से देख रहे होंगे इस विकेट की बाउंस को। वंस अगेन गेंद में बीट हुई निचले किनारे पे लगी, लेकिन रन मुकम्मल किया। 7 रन वाला ओवर मुकम्मल, 117 पे 4 कराची। 6 ओवर का खेल बाकी है। अब देखना यह है कि आजम कब ये फैसला करते हैं कि कब उनको ये अटैक, फुल टाइम अटैक करना पे जाना है बॉलर्स को। हम जानते हैं, हम देख चुके हैं कि आजम जब आखिरी ओवर्स में अटैक करने पे आ जाएं बॉलर्स को तो क्या हाल उनका कर सकते हैं। दुनिया भर की लीग्स में उन्होंने करके भी दिखाया है और आज ये बेहतरीन मौका है कि अपने शहर कराची के लिए भी वो ऐसा ही कुछ करें। अगर इसी तरह चलते रहे तब भी 167 को वो माइंड नहीं करेंगे, लेकिन जितनी बैटिंग एबिलिटी है लाहौर के पास और अभी अगर आजम सेट हैं तो वो इवन 190 तक भी पहुंच सकते हैं, जो कि गैर मामूली फिनिश होगा इस पिच पे और वो एक गैर मामूली चैलेंज होगा लाहौर की टीम के लिए चेस करने को। काशिफ भट्टी गेंद करने के लिए वापस आ गए, जिन्होंने पहले 2 ओवर में 16 रन कंसीड किए थे। वो वक्त था जब अबाद आलम खुर्रम मंजूर को हाथ खोलने का मौका मिला था। ऑन साइड पे बड़ी बाउंड्री है दानिश अजीज के लिए और खतरनाक अंदाज से निकले थे, कश्तियां जला चुके थे, लेकिन विकेट कीपर भी चूक गए, बल्कि जख्मों पे नमक पाशी करते हुए लाहौर की गेंद चौके के लिए रवाना वाइट के। खुशकिस्मती इस बार दानिश की, बॉल लेग स्टंप के बाहर टांग से लग गया मेरे ख्याल से, इसलिए विकेट कीपर को भी मुश्किल हुई। लेग बाय का इशारा, पैड से लगती हुई बॉल दानिश के, 4 रन बाय के, लेग बाय के। आजम की गियर को चेंज करने के हवाले से आप बात कर रहे थे, हमें अभी भी अगर हम आने वाली बैटिंग में देखते हैं तो इनको गो के शायद बैटर के जहन में ये सरेदस्त नहीं चल रहा होता कि बाद में कितनी फायर पावर है, उसको अपनी इनिंग्स को बिल्ड करना पड़ता है, लेकिन खासा वक्त अभी बाकी है और वो हर ओवर में भी अगर कराची के नुक्ता निगाह से एक बाउंड्री भी हासिल कर लेते हैं अगले 4 ओवर तक तो बड़ा वो एक्शन पैक रन रेट हासिल कर लेंगे। तो इसी जानेब अपने इब्तिदाई ओवर्स की जाने वापस आ गया लाहौर, पैक किया हुआ है ऑन साइड की फील्ड, मुख्तसर बाउंड्री को और गैप में खेलने की कोशिश की है और कामयाब हो गए। टॉप क्वालिटी क्रिकेट, बैकफुट पे शॉट निकाला, बड़ा चेस किया लेकिन ना पहुंच पाए। खूबसूरत चौका आजम का, बहुत शॉर्ट बॉल थी ये काशिफ की। आजम खान जब इस मूड में आ जाएं और इस सिचुएशन में, इस पोजीशन में हो, बहुत देर से बैटिंग कर रहे हैं, तो इतनी पीछे उनको बॉल नहीं की जा सकती। कासिम अकरम जो कि बेहतरीन फील्डर्स में शुमार होते हैं वो थे, लेकिन गेंद उनके बरक्स ज्यादा तेज निकली तवक्कात के। रिपीट करना चाहते थे पॉसिबली पिछले शॉट को, बड़ा कम गैप मौजूद था जिसको बिहाइंड द स्क्वायर शॉट निकालने की कोशिश की और मुस्कुरा के अपनी खजालत को मिटाया। शॉट मारने के बाद अगर आप एक्सप्रेशंस देखें, छोटी बाउंड्री की जानिब खेलने के लिए गए और एक मरतबा फिर बीट कर दिया फील्डर्स को। अगर नापने के लिए गए तो उनके एन दरमियान में खेले आजम, पहले कवर्स और इस मरतबा ऑन साइड पे 3 गेंदों में 2 चौके, अमेजिंग आजम के। पिछली बॉल पे अगर आप देखें कट मिस किया, काफी डिसअपॉइंटेड थे क्योंकि उनको गैप नजर आ रहा था और भरपूर फायदा उठाया इस बार अगली बॉल का। काशिफ के हक में कुछ नहीं हुआ, पहले 2 ओवर में 16 रन देने के बाद वाइट से शुरुआत की और 14 रन दे दिए इस ओवर में।
खतरनाक रन हो सकता है, डेंजर रन में पहुंचना है, डायरेक्ट थ्रो जाकर स्टंप्स पे लगी है और केस ऊपर भेजेंगे। क्लोज मामला लगता है। हुसैन तलत का ये आर्म था जिसने रॉकेट की तरह थ्रो की, बुल्सआई को हिट किया और डायरेक्ट हिट आप जानते हैं कि कई मरतबा बड़े क्लोज मामले लेकर आता है और डिफरेंस क्रिएट करता है हमारा। बहुत ही खतरनाक रन था और डायरेक्ट हिट हमेशा जो है वो कुछ ना कुछ ड्रामा क्रिएट करती है। देखें आसिफ याकूब के एक्सप्रेशन से हमें लग रहा था कि बहुत ही क्लोज है और उनके ख्याल में शायद ये आउट भी है और ठीक ही फैसला आसिफ याकूब का भी था। कुछ काफी दूर है आजम, बैट स्ट्रेच नहीं किया पूरी तरह मेरे ख्याल से, अगर थोड़ा सा स्ट्रेच करते तो शायद और क्लोज आ जाता मामला, लेकिन डायरेक्ट हिट हमेशा जो है वो खतरनाक होती है बैट्समैन के लिए। 70 रन की पार्टनरशिप, हार्ट ब्रेक कराची के लिए। लाहौर को एक मरतबा फिर बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। मानी खेज विकेट टर्निंग मोमेंट साबित हो सकता है इस इनिंग्स में और ओवरऑल मैच में, लेकिन एक्शन पैक इनिंग्स खेलकर आजम रन आउट हो गया हुसैन तलत की शानदार पिक्चर परफेक्ट थ्रो पर। 131 पे 5। बहुत ही अच्छी फील्डिंग हुसैन तलत की, मैच चेंजिंग फील्डिंग हो सकती है ये इस वक्त जो एफर्ट उन्होंने की है, क्योंकि आजम खान के लिए प्लेटफॉर्म अब उन्होंने खुद ही सेट कर लिया था अपने लिए और ये वक्त आ गया था कि जब वो अपने अंदाज को भरपूर तरीके से एक्सप्रेस कर सके, अब जो उनका नेचुरल खेल है उसको। नए आने वाले खिलाड़ी मोहम्मद अफजल, विकेट कीपिंग भी करते हैं मोहम्मद अफजल, जिन्होंने इसी सीजन में अपने T20 करियर की शुरुआत की और अब तक उन्होंने अपने इस लेवल पे टैलेंट को दिखाना है, लेकिन ये भी इस एबिलिटी के हामिल हैं कि इनिंग्स को फिनिश कर सकें। दूसरी जानिब अचानक से वो 5 ओवर जो कि आजम के रहते हुए थोड़े लग रहे थे ज़्यादा रन्स बनाने के लिए, अब लंबे लग रहे हैं इन 5 खिलाड़ियों के साथ। दोबारा इस एंड से तब्दीली, निसार आ गए गेंद करने के लिए। बड़ी ट्रिकी सिचुएशन हो जाती है ये कभी कभी। ये देखिए ये थोड़ा सा लेट निकले वो और ये बैट देखिए स्ट्रेच नहीं किया पूरी तरह से। अगर थोड़ी सी एफर्ट आखिर में आजम और कर लेते तो शायद कुछ फैसला मुख्तलिफ हो सकता था, लेकिन जैसा कि हमने डिस्कस किया डायरेक्ट हिट जो है वो हमेशा खतरे की घंटी होती है बैट्समैन के लिए और ऐसा ही हुआ। ना सिर्फ ये कि विकेट हासिल किया बल्कि मैजिकल मोमेंट बन गया इस इनिंग्स में। ये अगर पूरी इनिंग्स में ना भी सही, लेकिन अगर 1-2 ओवर तक मौजूद रह जाते और 20-25 रन का फर्क क्रिएट कर देते तो आखिरी ओवर्स में मानी रखता। और एक मरतबा फिर निसार का बाउंस बहुत साबित हुआ, सरप्राइज किया इस शानदार बॉल जो कि टेप बॉल की तरह उछलती हुई गई है। बैक फुट पे अपने लिए बाउंड्री हासिल करना चाहते थे लेकिन पूरी तरह बीट हुए दानिश। थोड़े से मायूस नजर आए दानिश यहाँ पे, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी नजर आ रही थी कि शायद उनको विथ मिल गई थी ये कट मारने के लिए, लेकिन वो एक्स्ट्रा बाउंस ने एक बार फिर परेशान किया बैटर को। और एक मरतबा फिर निसार के खिलाफ ऊंची गेंद को उठा दिया और निसार जब आ रहे हैं विकेट दिला रहे हैं। 30 विकेट हासिल कर ली कराची। एक मरतबा फिर मुश्किलात के भंवर में, लाहौर ऑन द टॉप। काशिफ भट्टी के महफूज साथ एक और विकेट दिला गया लाहौर और निसार को। तीसरी विकेट है जो शॉर्ट बॉल पे आउट हुए हैं। ये सबसे पहले मेरे ख्याल से कैप्टन असद शफीक शॉर्ट बॉल पे आउट हुए, खुर्रम मंजूर शॉर्ट बॉल पे पुल मारते हुए लेट हो गए बॉल पे, वो आउट हुए। और अब ये देखिए पुल मारा उन्होंने, लेकिन फिर वही एक्स्ट्रा बाउंस जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि बॉल इतनी ऊपर चली जाएगी और टाइम नहीं कर सके उसको और लॉन्ग ऑन बाउंड्री पे आउट हो गए। दानिश अजीज 24 रन करने के बाद आउट।
मुरम्मत करने की कोशिश करनी है इस अदरवाइज गिरती हुई इनिंग्स को दोबारा सहारा देने के लिए। आरिफ आ गए हैं बैटिंग करने के लिए, जिनको अब से कुछ देर के बाद अपनी लेग स्पिन बॉलिंग का जादू जगाना होगा। इस टूर्नामेंट के बेहतर बॉलिंग करने वालों में से एक हैं, लेकिन उससे पहले कुछ रन समेटने पड़ेंगे। और अब तो ये मुसीबत आन पड़ी है कि क्या पूरे ओवर भी खेल पाएंगे या नहीं। और बज़ाहिर ये लगता है कि जो उनके बाद आपस में बातचीत हुई वो तो वो जानते हैं, लेकिन लगता ये है कि पहला टारगेट है कि कम से कम इन 4 विकेट्स के साथ बाकी मांदा ओवर्स को पूरा खेलें। दूसरी तरफ निसार हैं, उनको वापस लाए कप्तान गेंद करने के लिए, और आते ही एक मरतबा फिर शानदार बॉलिंग की विकेट दिलाई। तेज रन वहां पर लपके रन बट, और फिर ये जाएगा केस टेलीविजन अंपायर की जानिब। लेकिन इस मरतबा लगता है कि अपना पहला रन हासिल करने के लिए आरिफ अपने घर पहुंच चुके थे। इमरान भट्ट लग रहा है कि विकेट हासिल कर चुके हैं, तो इंटरेस्टिंग होगा रिप्ले हमारा। बहुत ही करीब मामला है। डायरेक्ट हिट एक बार फिर, और मुश्किलात का सामना बैट्समैन को। बड़ी अच्छी पोजीशन में अंपायर आप देखिए, और ये बहुत ही टच एंड गो है एक फ्रेम पीछे। और ये देखिए बॉल पेयर्स ऑफ हो गई हैं। शायद दोबारा देखना चाहें अंपायर इसको, लेकिन लगता ये है कि चूंकि विकेट्स डिस्टर्ब हो चुकी हैं और इस पर नीचे के डिस्टर्ब होने के बाद बेहतरीन एंगल है। फुल मार्क्स टू द कैमरामैन इन दिस एंगल, जो कि अगर कोई डाउट है तो शायद उसको क्लियर कर देगा। अभी लाइन तक प्रॉपर पहुंचे भी नहीं है पहला रन लेने के लिए। आजम से ज्यादा तेज थे, लेकिन पहले हुसैन तलत और अब इमरान भट्ट की थ्रो जो कि गेम में वापस लेकर आई लाहौर को। इमरान जावेद टेलीविजन अंपायर दोनों एंगल से कंफर्म कर रहे हैं बड़ा डिसीजन आने को, जो कि कंफर्मेशन आ गई। मैजिकल ओवर, पहले कैच और अब पहली गेंद पर विकेट हासिल हो गई। रन बनाने की कोशिश में आरिफ को बैक टू बैक विकेट्स लाहौर के लिए, और कराची एक मरतबा फिर मुश्किलात में। आरिफ याकूब रन आउट, इमरान की डायरेक्ट हिट, बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए। इमरान जावेद टेलीविजन अंपायर बहुत इत्मीनान से उन्होंने मुतमईन होके आउट दिया, हर एंगल से इसको देखा, जो कि टीवी अंपायर का फर्ज है, और एक अच्छा फैसला। नए आने वाले बैट्समैन सोहेल खान। गैप में खेलें और अब एहतियात के साथ रन हासिल करेंगे। रन आउट होने के बाद एक मरतबा फिर टीम को उठाना आसान नहीं होता, और वो भी 7 विकेट्स के गिरने के बाद। सोहेल के पास इतनी एबिलिटी मौजूद है कि वो फ्लिक करके बड़े शॉट्स लगाने के लिए जाएं, लेकिन उस लेंथ पे शायद गेंद करे नहीं जिस अंदाज से लाहौर वापस आ चुका है। और इस मरतबा इमरान भट्ट थे, और जितने कॉन्फिडेंट वो थे उन्होंने तो वहीं डिसीजन दे दिया था, हालांकि फ्रेम बाय फ्रेम देखना पड़ा, कोई भी आंख बंद करके फैसला नहीं दे सकता था। लेकिन अगर आप धड़कते हुए जॉन्टी रोड्स को देखना चाहते हैं इस वक्त, तो ये हैं लाहौर के जॉन्टी रोड्स। इमरान भट्ट चाहे स्लिप की फील्डिंग हो या डायरेक्ट थ्रो, सब में मुश्ताक। डबल विकेट ओवर निसार का मुकम्मल, 133 पे 7। कराची को चाहिए कुछ तमानियत, कुछ हरारत, लेकिन क्राउड भी यहां पर अपने आप को महसूस करा रहा है चपाल टी से। बेहतर कमबैक की जरूरत है दूसरी जानिब कराची वाइट्स को, और लाहौर की पोजीशन टेल के साथ अब 133 पे 7। सर देखिएगा, देखिएगा सर जी। Right, Azam Khan ran out on 41. I thought if he had stayed, Karachi was well on their way to get to that 180 mark. But since his departure, run scoring has just gone slow. Couple of run-outs, 16 overs, 133 for 7. Karachi cannot blame anyone but themselves
the way they've lost their wicket. Hunain Shah is back, and so is Shah Faisal alongside me in the commentary box. A very good evening, Shah Faisal. Good evening, Ali, and good evening all. Yeah, that partnership between Danish and Azam was threatening to take Karachi to a formidable total, but they've stumbled along the way. That's high. How and outside the off stump. Couple of things going to batter's way. Yeah, we've seen good bounce on this pitch, so back of length, yeah, it's more likely it will go over the top. It came right across his stumps as well. Impact also a question mark. Hit him high above the pads. Umpire Asif Yaqub swiftly moving away. Yeah, looking at this Karachi innings, they looked good when Azam was batting. But I think at the moment they would like to just bat out the 20 overs, get up to 160 somehow. It's now up to Sohail Khan. He can hit big. But Faisal, they've been taken by surprise. I think Nisar and Hunain, they were prepared well. They surprised Karachi batting with their short pitch deliveries. 5 out of 7 going to short pitch deliveries. First one, Hunain Shah. This was a poor shot, I say. He was playing so well until he played this shot. And then Nisar came into action pretty late this time for a Manzoor. Easy catch. Again, short pitch delivery, not executing it. Straight to the man. This one, again, a shorter one. Nisar Ahmed has been very impressive this evening. Again, some reverse swing for Hunain Shah. Will go towards Quayle, a couple of runs. Yeah, easily taken in the end. First it was short pitch delivery, and then later on that running between the wickets. This was a crucial moment in the game. Look how halfway through Azam was slacking. He wasn't pushing. And then Danish Aziz, never comfortable against the short ball. Another unnecessary run out. Superb fielding by Imran Butt, though you have to say Lahore were there for all the opportunities that came their way. Ash over the head of the keeper. Very lucky Afzal this time. It was very close to Tariq Nawaz. Very lucky still to be there. A boundary, they'll take it. Absolutely, and Afzal has started to move around the crease. I would have thought that he would like to consolidate for a little while, but no. First he swapped one to the onside, and now making Hunain bowl that short pitch delivery, the top edge. Inexperience there from Hunain, but Karachi will take any runs they can get. They got good, decent bowling lineup. They can make a match out of it on this very nice pitch. Flat batted it. Yeah, Lahore White scored 136, and Peshawar did it quite easily. In fact, ridiculously easily, the way they batted. So Lahore must believe that run chase has been easy on this pitch. The ball is coming nicely onto the bat. They've got a decent batting line. They must not let go of this start, or in fact, they've all their hard work till now. They've taken 7 wickets. Have just been handed over a stat by Farhan that the passage between 9 to 14, they scored 47 runs without a wicket. That was the best time of their inning. 1 to 5 overs, they scored 48, losing 1 wicket. Oh, he's launched at it. There is a fielder. He should be able to take it. He has. Imran Butt, making no mistake, is one of the safest fielder around, getting the wicket of Afzal. Hunain Shah in action again. Yeah, Afzal was going at a shorter ball in this over, and eventually he paid the price. Only time will tell if he had more time to bat around and then go big in the last couple of overs, but he was thinking otherwise. Got away on a couple of occasions, but wasn't lucky on the third occasion. No problem there with this front foot. Hunain Shah bowling full and straight, keeping the fielder straight at long on, and Imran Butt is a wonderful fielder. He's not going to miss that. Afzal gone for 8, Karachi reeling, 141 for 8.
seems like Karachi Whites are in a hurry. They could always take this time, but there's everyone coming and hitting and losing their wicket. I think after that phase from 19 to 14 over, where they scored 47 for none, the next phase, 15 to 17 overs, 24 for 4 wickets. That's where the trouble is. They've lost wickets. And some cheap wickets, not scoring runs, not staying there. That's why I said they seem to be in a hurry. Aftab Ibrahim, 3 matches, 7 runs. Ahmed Asif starts off with a wide. Aftab Ibrahim can bat. Don't be fooled by his figures. He's only new at this level. But Sohail Khan now, another 18 deliveries. If you think about it, they get 18 to run a ball. They'll get up to 160, giving the bowlers something. But Afzal was in a hurry for sure. He chanced his arm every time he faced in this over, and eventually he lost his wicket. So is the call. They're not going to get it. No way they're getting this. Qasim Akram, very quick. And one of the good fielders around also. What's the good total now? You've been on the pitch. You saw the first game. Chasing is easy. What should Karachi be looking at? I think the wicket is at its best right now. 160 should be a bare minimum, considering Karachi's got a good bowling lineup and a couple of early wickets with the new ball. But anything less than that, especially if they get bowled out without using their 20 overs, they would really hand the initiative to Lahore. There's no doubt about it. Absolutely. That has to be the bare minimum, as you said. And for that, they have to stay. They seem to be in a hurry, losing wickets quite regularly. And wickets, they were unnecessary. Run-outs, Faisal. Azam Khan, as long as he stayed, there was hope that they might get to 170. But once he lost his wicket, they just lost their way. Actually, he was the one who rescued the innings, because when he arrived, that innings was teetering anyway. But he was the one who gave the impetus and forged a partnership with Danish Aziz. But when he went, Danish also didn't realize the need of the hour was for him to then stay. But then he lost his wicket, and then the youngsters came. They would just panic, in a panic mode, run out, and then Afzal swinging at everything. And now they're really staring at the prospect of getting bowled out inside 20 overs. Yeah, and we've been witnessing it from last 3 or 4 games that Azam Khan comes at a point where the team needs him to finish the inning, but he's been unable to do it. A couple of times in a chasing course, and today also when he was batting, Karachi wanted him to stay till the end, but then lost his wicket too. That's where he needs to work on. If he has to play at a bigger level, at international level, you need to be able to finish, have that potential of finishing the game. That's where he's missing out, I believe. If you want to be critical of him, yeah, that's the point. But today, even when he got run out, you see halfway through that run, he just slacked for no reason. He should have been sprinting as fast as he could. And in the end, he was just short by a couple of inches. And at this level, such a competition, intense competition, the margins are very small. Again, 2 is the call. They're not going to get it again. Yeah, the guy has immense talent, immense power. Everyone loves when he's batting, the way he hits it. It's just disappointing that he just gives away his wicket quite easily. He doesn't really value the wicket. That's where he needs to improve. Absolutely. He's a genuine match winner. And he needs to put a higher price on his wicket. Not in terms of his stroke play, because he's just so natural. The way he took Usman Qadir on, there was nothing wrong with the bowling. But he made it look ridiculously easy. Edge third. Usman Qadir does well in the end. Just 1 run to finish the over. Umaid Asif bowled out. None for 30 in 4. 18 gone, 146 for 8.
taller bowlers have got good bounce. Umaid being one of them. Almost carried to third man. That's why I say 160 will be a good contest, because we know Sohail Khan is very good with the new ball, even with the old ball. But he will move the ball around, there is no doubt about it. And then Ghulam Mudassir, if he gets it right, he does have the ability to bring the ball into the right-handers. Last game he couldn't find his radar, but if he's on target, he could be a handful too. And then the leggy Arif, he's going to get some purchase out of this pitch, there's no doubt about that. And also the thing that goes in the favor of Karachi is that I believe Lahore Blues are a batter short. A lot will depend on Imran Bhatt and Hussain Talat. Hunain Shah, last over. Oh, that's beautifully played. Fantastic shot over the head of extra cover. That's one of the toughest shots to play in cricket, and he did it with some ease. Yeah, beautifully played. 150 has been brought up. Yep, that was inside out, and that was sweet. As you could see, the dugout, they really liked it as well. And all of a sudden, we heard the crowd wake up as well. Suddenly, they realized they need to get behind their team, Karachi. That is sweetly struck. Wasn't a half volley. Yeah, not the first time that we've seen a brilliant shot over extra cover. 3 that I can remember, including this one. Ahmad Alam played one. In the first game, Ahmed Shahzad played one over extra cover for 6. Good comeback. Oh, Tariq Nawaz can't do that. Not the first time again. They're definitely missing Shahwez Irfan. Junaid also in the camp. He's been called from Lahore to play this game. You need to realize that in this game, like I said, the margins are very small. So every run given away is a run that you'd have to make. And in such tight contests, you don't want to do that. Yeah, the bowlers hate it. If they're having a setup to one better and the keeper lets it go, they're not going to like it. Especially somebody like Hunain, who's just fired up at the moment. 3 for 34. A touch of reverse swing also for Hunain. He's just been brilliant throughout the season, Faisal. We've been seeing his progress from last year. He's been the most improved bowler, fast bowling, if you talk about, throughout the season. 4-day cricket you talk about, ODIs you talk about, and now in T20. Last year, we've seen him on the sidelines working hard all the time. He was putting the hard yards. He got fewer opportunities, but then this year, he's really shone brightly. Longer version, the 50 overs or the 45 overs, and this shorter format. He's definitely put his name out in the shopping window for the PSL franchises. The scouts are watching him. Definitely, he's one for the future. A bit of a competition within the family, Faisal. 3 brothers, 3 fast bowlers. 1 in domestic, 1 international, 1 in Pakistan under 19. Again, through extra cover, but this time there is protection. Good to have that competition. How much would be the odds for all 3 of them playing for Pakistan one day? 3 fast bowlers, 3 from the same family. Never happened in the history of Test cricket. 3 batters, yes, we've seen the Chappell brothers, the Muhammad brothers, but 3 fast bowlers, never happened. And 3 good fast bowlers, quick fast bowlers. Naseem Shah, we know he's a global superstar now. He has all the potential to be one. Ubaid, one who's going to play in Pakistan under 19 team in Asia Cup. Again, brilliant. That's where he has been so good at. Hunain Shah, those Yorkers. Remember the last time Blues played here, the last 12 deliveries were Yorkers. 6 by Salman Irshad and 6 by this youngster. Salman, I expect, because he's experienced, but at this age, Hunain Shah mastered this art. Look at that tail at the very last minute. Sohail Khan, who himself does that to others, would surely have admired this delivery because it was very, very good. 8 runs off the over. This is death bowling at its very best. Now, we don't want to build him up too much for him to bowl a rank long hop or a loosener.
Ah, he's played it straight to the man. Just one run. 19 gone, 155 for 8. Right, last 6 deliveries, 155 for 8. Karachi Whites. Nisar to bowl the last over. He's been very impressive. This is the first time that we're seeing him in this tournament. 3 overs, 3 wickets, 14 runs. Best figures for him. It took just Karachi by surprise, the way he bowled. Short pitch deliveries, I think they came prepared for Karachi's top order, and he has executed it brilliantly. How can he finish? Karachi, ideally they would want 15 runs. If they can get, they'll be a very happy side. But it's not going to be easy against Nisar. Third inside the circle. Mid-wicket coming inside the circle now. Deep point. In fact, Swale coming inside. Deep point. Deep cover in place. Long off, long on also in place. Be aware of the short pitch deliveries. No, outside the off-stump. Fuller. Disappointed Aftab Alam. It was there to be hit because third is inside the circle. Had he connected, it surely would have been 4. Interesting field. The short third is very, very fine. Probably he's looking for those wide Yorkers because that backward point fielder is pretty fine. And then we got a fielder deep cover. That's the offside field for you. He's hit it straight. Oh, that was brilliantly placed. I thought it's gone straight to the fielder, but the placement was just perfect. This boy can bat. Not the first time that he's played a classical shot. Absolute smash. He just cleared his front leg. The bowling plans would suggest, because there is no fine leg, no square leg, so he's not going to bowl short. And Aftab Ibrahim really read that. Although long on was straight, and it's Imran Butt, who's one of the very best, couldn't get near that ball. He's appealing for it, but umpire calls it a wide outside the off stump. Probably that the bat touching the pitch. That's the noise that we could hear, Faisal. What do you think? Yeah, it did hit the ground, but it's interesting. Did it hit the bat as well? It was wide. The decision was good on both counts. It was a wide delivery, and yeah, the ball did not hit the bat. The noise came from the bat hitting the ground. Funny plans from Nisar, though. This one will work towards the point. Yeah, but this field setting, he gets quite predictable that he's going to bowl at that line of length. Although these are 2 tail-enders batting, but still, with this field setting, he's going to bowl outside the off-stump Yorker length or fuller deliveries. I mean, he troubled the top order batters with his back of a length steepling deliveries. Why would he want to give that opportunity for a tail-ender to free his arm? Although Aftab seems better than a tail-ender, it's just that he's batting lower in the order. But still, just can't understand these plans. Yeah, the plan changes for the right-hander. There's a deep square leg, deep mid-wicket, third inside the circle, fine leg inside the circle. So get ready for some short pitch stuff from Nisar. Now Fuller again, good bowling, just mixing it up, not letting the batter know. See, now that was a better field and a better plan, because he'd had batters set up for both. So in the end, that Yorker was tailing in, another evidence of reverse swing, but also Swale must have been thinking about that bouncer. Double bluff. He's smart. He's got that whip in him. He's got good pace. And he's brave also. Right, last 2 deliveries. Nisar to Aftab again. Good bowling. That is just brilliant. Although I thought they're going to miss Salman Irshad in death, but Nisar has done equally well.
Aftab is looking to bludgeon the ball very hard to dig it out from that kind of length. It went under the bat. For once, Nisar got his plans and execution right. That is exactly what he was looking to do from ball one. 7 of the over already. 1 to go. Last delivery, Nisar. Oh, that's nicely placed, but there was no pace on the ball. Slower one by Nisar again. There was a chance for run out, extra run given quite easily. That is sloppy, really sloppy. And third one even. No, it's going to be run out. Yes, definitely easy decision. But that was sloppy from Lahore side. Because as you said, each run matters. Disappointed captain Hussain Talat on his knees. But that's the end of the inning. Karachi White scoring 164 rather after this couple of runs. Really comedy of errors there. The batter first he's on his backside when Hunan gets the ball. And look at that throw, how high it is. And where is the bowler? Nisar is nowhere to be seen. And then Hussain Talat, I think, got struck on his knee because that ball was bouncing awkwardly in front of him. Well, all is well that ends well in the end, but 2 runs conceded of that last delivery. And handy runs added by this partnership. Aftab really batted nicely. Sohail gave him company, couldn't get the big shot out. But Karachi's got a total on the board, 164. And it should be a hell of a run chase when we come back, because this is superb cricket. And I don't think against Karachi bowling it's going to be one-way traffic. Absolutely, 100%. Karachi will be a happy side. Lahore Blues will require 165 runs in 20 overs at 8.2 runs per over. 33 runs coming in last 5 overs. The rest of them, 3 for 23. Sensational bowling from him, and he was the man who caused that middle order collapse. And those wickets really came handy to pull Karachi back from what they were looking to score quite a big total. In the end, he was the man who reduced them to 164 for 9. 3 for 23 for Nisar is there with Akil Sama. Over to you, Akil. ये निसार आपका मौका है, अपॉर्चुनिटी मिलते ही कैसे ग्रैब किया, इसकी बेहतरीन मिसाल बने हैं, तो कैसे आपने अपॉर्चुनिटी के हवाले से तैयार थे फौरन खेलने के लिए? सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने अच्छा परफॉर्म किया. और सेकंड थिंग कि हमारा जो प्लान था, कैप्टन ने जैसे जैसे प्लान दिया और साथ में भी खड़े हुए थे, उन्होंने कहा था कि लेंथ बॉल पे जो है वो मुश्किल हो रहा है शॉट मारना. तो मैं कोशिश कर रहा था कि लेंथ अच्छे एरियाज़ को हिट करूं, और लेंथ बॉल मैंने ज़्यादा किया, जिस वजह से जो तीनों मैंने आउट किए वो भी लेंथ बॉल पे ही आउट हुए. बस दैट्स इट. टॉप ऑर्डर को आपने स्वीप किया, शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया. कुछ अपने बारे में बताइए, क्योंकि ये आपका मोमेंट है, सारी दुनिया इसको देख रही होगी, तो आप क्या अपने आप को किस अंदाज से इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे? मैंने इसके लिए काफ़ी स्ट्रगल किया पीछे, तो मेरी कोशिश थी कि मैं अच्छा करूँ, तो मुझे मौका मिला, मैंने अच्छा किया और आगे भी इंशाल्लाह अच्छा करने की कोशिश. वेल डन, आपका करियर बेस्ट है, ऑल द बेस्ट. थैंक यू. Struggle is the name of the game, Faisal. And struggle it was for Karachi. Aliyan Ahmad and Khurram Manzoor, they did get some boundaries early on. That was a brilliant shot over extra cover. Khurram Manzoor was in action too. And then things started to happen after Hunain Shah got this wicket off Ahmad Alam. That was a poor shot by him, quite easily taken. Khurram Manzoor again falling short of the
short pitch deliveries. Again, they took the Karachi Whites by surprise. The short pitch deliveries, they planned well and executed that plan brilliantly. Nisar was brilliant. Azam Khan and the Anashizis showed some resistance, couple of quality boundaries, and that over of Usman Kader, we thought Azam Khan is going to go big. Got some brilliant boundaries, and then he ran himself out. Look at that very sloppy effort by Azam Khan. And then after that, they kept losing quite easily those wickets. Run out after run out. This is Arif. Courtesy some brilliant fielding from Imran, but no order. They did their best. Afzal one boundary and out, but Aftab was the one who played a little cameo towards the end. Those boundaries kept coming till the end, and 164 in the end is a decent total. 165 will be the target for Lahore Blues when we come back with the run chase in just about 5 minutes. Lahore Blues have won the toss. They decided to bowl first. Cracks it hard and will beat point. Yes, he does. Nicely done. Nicely done. शॉर्ट आर्म फ्लिक और अब के नहीं बच पाएंगे। शार अहमद गेंद करने के लिए आए और उन्होंने भी विकेट हासिल कर ली। शॉर्ट आर्म फ्लिक, कैच आउट। भी उठाकर खेलने के लिए जाने का शौक चढ़ा और उन्होंने भी अपनी विकेट गंवा दी। ऑन साइड पे गए और उससे भी ज्यादा पावरफुल
Welcome back to the National Bank Stadium. Target is 165 for Lahore Blues to chase it and win it. Karachi asked to bat first, managed 164. They had a good start in the power play, then started losing wickets at regular intervals, but the scoring was going pretty okay. It's just they couldn't cash out much in the last 5. It's time for Lahore Blues in red to come out and do the chase. You can see Imran Butt on your screen at the moment. Asad Shafiq would be hot and cold, I'd say. Not very happy with the total, but he won't be as sad. 165 to win can be a fighting total with the kind of bowling they have. Starting off with Sohail Khan, Ghulam Mudassir and others. Emir Saeed alongside me. Again, hot and cold performance, Imran Butt there. Yes, definitely a bit short of what they might have been expecting. But from the position they were in, after like 14 overs, 15 overs, and that cluster of wickets, I think they would be happy with that total. It's very important to start off well and finish off well in a T20 game, and that is where Karachi lacked. They couldn't finish as well as they started. Cut away, there's protection. You'll expect some early swing from Sohail Khan. He's good at that. Good to see they've got a slip in position. Asad Shafiq looking to get early breakthroughs, especially in that power play. If you can grab a couple, then you put the batting side under pressure straight away. Not much movement for Sohail Khan of the pitch, but he can swing the new ball. We have seen him do that, especially that away swing, and he would be looking for that swing to get those early wickets, to put pressure on the Lahore batting. From Lahore's point of view, it's a total which is not too much and not too less, so they need to just have a good power play, a fairly good power play, say around 45, 46, and then build in over 7 and 15. There's a great opportunity for them to chase and win. They have beaten this side in the round stage, but that was their bowling effort rather than batting. Oh, that's a good shout. If there's no bat, there's trouble there. There's trouble. He's gone. He gets that swing. He gets that shape. And he strikes. That is the swing we were talking about. And Sohail Khan immediately pitches it up, gets that swing, hits the pad in front. 100 national T20 wicket for Sohail Khan. And a very important one in this match where Karachi needs early wickets. Foot is all right. Let's see that. Well, very happy with that, Sohail Khan. And that is exactly what Karachi needed early on. As you said, Sikandar, it does get tricky at times when the score is not too much and not too less. Then it's you've got to plan it properly, otherwise you might just end up in no man's land at times. You've got to keep wickets in hand, get a good start, yes. Keep those wickets in hand so you can go after the bowling, even if it's like 7 or 8 runs in the end. But if you lose those wickets, lose that momentum,
it gets difficult and difficult. Hashim Ibrahim on debut. Slip in position. Sohail Khan all set and ready. Leans into it but finds Umair bin Yusuf at backward point. What a good ball that was. Late dip into the left-hander. That's very Sohail Khan-like. He's played all around it. It would clip the leg stump. And umpire Asif Yaqub's good umpire. Took a bit of time and then gave it in the favor of the bowler. And that brings 100th national T20 wicket for Sohail Khan. Topping it up amongst other big names, out of which Anwar Ali is the only one who's active player. Brings it in this time. Chance. No. Aftab was the fielder. Lahore has set the standards for fielding. 2 brilliant runouts. Look at that one, came in. Very quick, off the mark. Immediately after he played the shot, he went for the run and completed it easily with that misfield. Variable lengths in this over from Sohail Khan. He's pitched up a couple which have swung both ways. He's got a bit of help from the surface also. Successful over comes to an end. 3 for 1. You don't want to be batting on that surface. It's very bumpy, lots of craters. Spin from the University Road end. Danish Aziz, the left arm spin, has been given the job. Two men, deep square and long off. There you are to the right of your screen, the man in the deep, and then to your bottom left, the other one. Oh, he's hit the stumps. He's hit wicket. I could hear it. So did the keeper. He's gone. He's pushed himself too far back in that box. Imran Butt has committed suicide. Trying to cut that ball. The ball skid through and just to made him hurry with the shot. And in the process, he hits his own wicket. Very unusual dismissal. But this is what happens. You get too much inside crease, create that room to play that shot, and look at that. Hits the bails and off he goes. Yeah, well, as I said, he's just smashed his own bat onto the stumps while trying to cut that. Hit wicket, Imran Butt for 2. It's 3 for 2 in the second over. Qasim Akram is the new batter in. He's been playing seesaw in that batting order, up and down.
He's now there, all set with the job on hand. Not the kind of start Lahore was looking for, and exactly the start Karachi was looking for. 2 quick wickets, and there you go, the new batsman, Qasim Akram, 48 matches, 577 runs, strike rate of 130, 64 is his best. Both the batsmen on the crease need to do a bit of consolidation work. Kept low, that one. It's down to the same thing we were talking about. 2 wickets in the power play and game on. Now even the straighter deliveries will check the batsman. He's going to be extra cautious and try to absorb all the pressure, the 2 batters, which has been put up by Sohail Khan and Imran Butt himself. As he was hit wicket, that's the single there. End of the over, and another successful one. It's 4 for 2. Another wicket at this point would, there you see that dismissal, Imran, but too far in the crease, trying to cut that ball, create that space for himself, only managed to smash his own bails. Sohail Khan will ball his second now. That's nicely played. Very nicely played with some timing and come back by easy second. And some movement there, an extra bit of bounce. You see where Azam Khan collects the ball just around that shoulder. Yes, that has been the thing in this match, that extra bounce. We saw the Lahore bowlers do it, and here you see Sohail Khan getting some extra bounce. It just felt was around the shoulder, wasn't, but it did get some bounce there. Sometimes in real time you feel it's a little higher than it was actually. It's now a fuller one, just to the borderline of wide, and he's asking for something. Probably he's just trying to take Asif Yaqub's mind away from everything else. They call a wide. Initially he was so sure of that edge, he just kept on running. But looking at the keeper, wasn't very far away from the bat. Oh, what a ball. Also to do with Qasim Akram going on leg side to play that. He's played all around it. He's straightened up after pitching, and it's an ideal ball. Beautiful delivery that. Straight with the action. There you see trying to play it on the onside.
just a hint of swing, I think. Away swing, and very lucky Qasim there not to get an edge. He was angling in and he's looking to work it onto the onside, but just straightens up after pitching. Everything was correct about that delivery with that new ball. Oh, that's the extra bounce you're talking about. That's nip and zip off the surface. It's certainly extra bounce, but what sort of shot was he trying to play? That ball outside off stump, not that short. He was trying to hook it. Good thing he didn't get bat on it, not the edge. Even if he would have played that shot, it would have gone nowhere except up in the air. Dot ball, another good over, 6 for 2. A while ago we saw the Lahore Blues coach just checking some dew. What's it like? We've got Shah Faisal down there. We can probably take some help from him and see if there is any. I don't see any towels around. So Shah, what's the story inside that playing area? It looks pretty dry, Sikandar. There's not much dew here. I'll show it to you in a minute. There's nothing happening right now. There's hardly anything. It's completely dry and the conditions are fair and square. We want you to stay there in that position till dew comes. You know, I got a bad hammy, so it's all right, though. It's all right. Thank you so much for your help. Yeah, there's nothing. We haven't really seen any dew. At the time of the toss, Hussain Talat was of the opinion that maybe dew comes. That's why we want to chase. But there's been a bit of breeze around and the temperatures are also low. I mean, we haven't seen any dew, so I don't know why the captains of the toss are expecting dew. In the air and gone. Number 3 goes, wasn't in control of that shot. Danish gets the second one. It's gone to Arif Yaqub. And now Lahore Blues is in serious trouble. Well, pressure of the dot balls, I think. You're not getting those runs, especially in the power play, where you expect it to get some quick runs. That is what happens. You play a false shot. That ball was not really a half volley, but he still went for that extra cover drive. Upish. There you see. The foot is all right. That ball, not really a half volley, tried to play that extra cover drive. Only managed to give it straight to the cover fielder. Qasim Akram out for 3 runs. Hussain Talat, the skipper, is the new batter in. 163 matches, 3,000 runs, 80 is his best, with 124 is his strike rate.
Yeah, the captain has a job on hand now. With 7 for 3, he has to bring in all his experience, the numbers that you mentioned. The spinners won't have any trouble. As we just showed you, there's no dew whatsoever. It's bone dry. And good captaincy. We've seen a slip for Sohail Khan throughout. They're attacking. Oh, he's gone. That is suicide number 2. First Imran Butt, and now it's the captain himself. What are they up to? Only God knows. That was a very irresponsible shot by the skipper. He's just come in. Goes down the track. Misses it all together. And good stumping by Azam Khan. Quick hands. No chance for the batter to come back. Hussain Talat gone without scoring. 7 for 4. I call it the brain fade moment. Really no reason or an excuse to go out and play a shot like that when your own side, being the captain, is 7 for 3. Another debutant now, Tariq Nawaz. So both debutants are out there. Need some common sense to prevail now, because there's nothing unplayable out there. Had a good, very good in-swinging Yorker to the left-hander from Sohail Khan. Then suicide 1, hit wicket, suicide 2, rash shot. Again, Qasim Akram also trying to work him over the circle, getting caught at point. Only themselves to blame. Four gone, it's 7 for 4. ये है तबाही की दास्तान अब तक लाहौर ब्लूज की, जहां पर गैर ज़रूरी तौर पर ऊंचा खेलने के लिए गए, हिट विकेट में आउट हुए, कदमों का इस्तेमाल किया लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ और गैर मामूली स्कोर कार्ड ख़वातीनो हज़रात। 7 पे 4 4 ओवर के बाद, जहां पर बज़ाहिर एक ऐसा टोटल दिख रहा था जो कि इस पिच पर एक अच्छे आगाज़ के बाद उनके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता था, मगर नहीं, अपने लिए मुश्किलात खड़ी की हैं। गुलाम मुदस्सिर गेंद करने के लिए आए, लंबा चेज है, एक ही रन पे इक्तफा कर पाएंगे। सलमान बट हम मेरे साथ मौजूद हैं, शायद आप सेंस बना पाए जो कुछ अब तक हुआ है सलमान, लेकिन बड़ी मुश्किलात है उनके लिए। जो कुछ हुआ है, आई थिंक क्रेडिट टू कराची बॉलिंग। उन्होंने स्टंप्स में बॉलिंग की है, शानदार लाइन पे सोहेल खान ने पहला बॉल किया, इन स्विंगिंग यॉर्कर था, लेकिन अनप्लेबल स्टिल वो नहीं था। और आई थिंक के कराची की अच्छी बॉलिंग एंड ऑल्सो पुअर शॉट सिलेक्शन लाहौर की जो है वो कंबाइंड इस नतीजे तक पहुंची है कि 8 पे 4 खिलाड़ी आउट है। और कैप्टन बीइंग अ कैप्टन आपको पता 7 पे 3 आउट है और आप पहले बॉल पर है, बगैर सोचे समझे आप निकल के हिट मारने जा रहे हैं। सो देयर इज़ नो एक्सक्यूज, देयर इज़ नो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। आप इसको किस तरह बयान करेंगे कि इसकी सेंस बने। आई थिंक फुल मार्क्स टू कराची, दे वर स्पॉट ऑन, गुड लाइंस, गुड लेंथ्स, गुड फील्ड पोजीशंस और अच्छी कैचिंग, अच्छी स्टंपिंग। सो हमने तमाम चीज़ें जो अच्छी इनिंग्स में हुई हैं वो कराची की तरफ से देखी हैं एंड दे फुली डिजर्व टू बी इन दिस पोजीशन जो 9 पे उन्होंने 4 खिलाड़ियों का आउट किया। इससे पहले कराची ने एक रिमार्केबल कमबैक भी किया, गो कि वो उस 180 तक नहीं पहुंच पाए जो कि आउट राइटली आपको एडवांटेज देता है होम क्राउड के सामने, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ऐसा टोटल हासिल कर लिया था कि इस पर आप आंखें बंद करके नहीं कह सकते थे, लेकिन फिर ये डिस्प्ले किया। गुलाम मुदस्सिर के लिए अच्छा मौका है, टाइट लाइन और लेंथ के साथ गेंद करते हैं।
देखिए T20 क्रिकेट है और यहाँ पर ये 4 रन होंगे और कोई थर्ड में यहाँ पर मौजूद नहीं है। और आजम खान जो है वो इस टाइम पे कंप्लेन कर रहे हैं कि फील्डर वहाँ पर क्यों नहीं है। सो आई गेस ऐसा लगता है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग थी कि शायद पीछे कोई है, बट वेकेंट रीजन था। और मुझे लगता है कि बैटर्स को भी नहीं मालूम था, क्योंकि जिस तरह उन्होंने नच किया और जितना कैजुअली वो भागे, डेफिनेटली उन्होंने भी ये सोचा कि 1 रन ही होगा, लेकिन टू देयर सरप्राइज वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। और अब एक फील्डर जो है वो थर्ड की तरफ जाते हुए, और ये एक लाहौर को एक कह लीजिए गिफ्ट रिलीफ थोड़ा सा 4 रन की सूरत में। पहला चौका इनिंग्स का, गेंद जाती चली गई। गुलाम मुदस्सिर के लिए अच्छा मौका है कि वो मजीद दबाव डाल सकें लाहौर की इस बैटिंग पे। और ये जो गेयर को चेंज करने का आर्ट है, गो के T20 क्रिकेट में सलमान इतना वक्त नहीं होता, लेकिन आजम ने उसकी एक मिसाल पेश की है कि किस तरह से आप अपनी इनिंग्स को रैपिडली ढाल सकते हैं। आप की बात ठीक है कि वक्त नहीं होता, लेकिन प्रॉपर क्रिकेट अगर आप खेले तो फिर आप उसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं। और यही गेम अवेयरनेस है, क्योंकि इसमें भी 120 बॉल्स हैं और यहाँ पे 200 रन बनते हैं, उसमें चेस भी होते हैं, बड़ी बड़ी इनिंग्स भी बैटर्स खेलते हैं, और एक पीरियड आता है जहाँ पर वो थोड़े केयरफुल होते हैं और फिर वो लॉन्च करते हैं। और आई थिंक उसमें फ़र्क करना है हमारे यंगस्टर्स ने। अभी ऐसा लगता है कि जो सोच लेते हैं सिचुएशन वो हो ना हो वही करने जाते हैं, तो ये वो चीज़ है जिसको डेवलप करने की ज़रूरत है। तारिक ने एच कर दिया। कराची का तूती बोल रहा है नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में। गुलाम मुदस्सिर ने सेटअप किया ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद के साथ, पीछे गए थे तारिक और आजम के महफूज ग्लव्स में गेंद गई। बहुत ही शानदार लाइन, और एक ऐसी जगह पे जहां पे बैटर को खेलना ही पड़ता, लेकिन आई डोंट नो कि फेस क्लोज किया उन्होंने या वो सीधा खेलने जा रहे थे। अभी रिप्ले में हम देखेंगे तो हमें एग्जैक्टली पता चलेगा। फ्रंट फुट का चेक है यहाँ पर, और आई थिंक एब्सोल्युटली परफेक्ट फ्रंट फुट है, नो प्रॉब्लम विद दैट। और वंस सामने से जब हम देखते हैं तो देखिए बॉडी से कितना अवे ये बॉल है, और अगेन फ्रंट फुट की कोई मूवमेंट नहीं। सो टेक्निकल डेफिशिएंसीज जो हैं वो बेशुमार नज़र आ रही हैं जब आप बैटर्स को, स्पेशली जहाँ पर मिडल ऑर्डर अर्ली ऑन एक्सपोज होता है नए बॉल के आगे, तो वहाँ पर बिल्कुल ऐसे लगता है कि आशना ही नहीं है कि नए बॉल को किस तरह खेलना है, टेक्निकली किस तरह उसके साथ एडजस्ट करना है। लेकिन यहाँ पर क्रेडिट गुलाम मुदस्सिर को, बहुत ही अच्छी लाइन और लेंथ और एक अच्छा कैच आजम के लिए। और लाहौर अब 14 रन और आधी टीम वापस जा चुकी। मुश्किल शाम है लाहौर के लिए। इससे पहले लाहौर वाइट्स की टीम को पेशावर ने शिकस्त दी, और अब कराची और लाहौर के वो राइवलरी जो कि कुछ स्टॉपेज के शिकार थी वो दोबारा से उजागर हुई है। और ये आए हैं मैन ऑफ द मोमेंट, जो कि इससे पहले एक इम्पैक्ट क्रिएट कर चुके थे अपनी बॉलिंग से, लेकिन अब आकर उनको अपनी बैटिंग से कुछ डिस्प्ले करना पड़ेगा। निसार आए हैं बैटिंग के लिए। बैटिंग ऑर्डर के मुताबिक शायद काशिफ भट्टी होते, लेकिन वो लग रहे हैं कि कुछ वक्त लेंगे आने के बाद। सो निसार हैं बैटिंग के लिए आने वाले। अपनी बैटिंग की एबिलिटी दिखानी होगी निसार को, और अगर यहाँ पे सेकंड स्लिप होती तो फिर एक और मोमेंट क्रिएट हो सकता था। बहुत शानदार बॉलिंग। ओवर जो है अख्ताम को पहुंचा, और 5 ओवर्स के अख्ताम पर 15 रन, 5 खिलाड़ी आउट। और ये वो मंजर है जो लाहौर का आप देखें विकेट गिरने का, और यहाँ पर बहुत ही शानदार इन स्विंगर, और ये वो बॉल जिसपे हिट विकेट हुए, बहुत ज़्यादा डीप चले गए, कट मारते मारते नोटिस नहीं कर सके कि खुद किधर हैं। और ये सॉफ्ट डिसमिसल, ऊपर से खेलना चाहते थे कवर के, और उसके बाद इस शॉट की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि इसको करने की क्या ज़रूरत थी। और अगेन कोई टेक्निक नहीं अगेंस्ट द न्यू बॉल। बहुत ही कह लीजिए कि शानदार बॉलिंग और बड़ी लिमिटेड टेक्निक और फीट मूवमेंट। कराची छाए हुए जी इस गेम पर, और अभी पावर प्ले के हम अंदर ही हैं, और शायद ये इस टूर्नामेंट का सबसे अच्छा बॉलिंग पावर प्ले है। अगर किसी टीम का हम कहें तो शायद ये गलत नहीं होगा। इससे पहले हैदराबाद 23 रन पे 5 खिलाड़ी आउट थे, लेकिन आज जो है अभी 5 ओवर्स का खेल हुआ और 15 पे 5 आउट। दानिश अजीज को आज अपने गोल्डन आर्म को टर्न करने का मौका मिला है। उन्होंने पहले बैटिंग भी अच्छी पेश की, उन्हीं के साथ इस एंड से बॉलिंग की शुरुआत की थी।
और उनके लेंथ को लगता है कि क्विकली रीड करने में कामयाब ना हो सके। बहुत डीप चले गए खेलते हुए। निसार ने आज बड़ी मैजिकल बॉलिंग की थी, अपने करियर बेस्ट फिगर्स हासिल किए हैं करियर के इब्तिदाई हिस्से में। और लगता है कि बाउंड्री तलाश कर लिया निसार ने। एक कदम आगे आकर अपने लिए खुद गैप क्रिएट किया, 4 रन। एक अच्छा पॉजिटिव शॉट है। मिड ऑन ऊपर थी और मिड ऑन मिड विकेट के गैप में खेला, स्टैंड एंड डिलीवर स्ट्रोक। और निसार इस शॉट से लगता है कि ये स्ट्राइकिंग कर सकते हैं और इसीलिए शायद इन्हें काशिफ भट्टी से ऊपर भेजा गया है, जो कि डिसेंट परफॉर्मेंसेस पुट अप करते रहे हैं बैट के साथ। ये महज ये दूसरा चौका इनिंग्स का, निसार का पहला। बड़े सफर से गुजरना पड़ेगा लाहौर को। अभी उनके सामने शायद ये टारगेट भी हो कि वो अपने ओवर्स मुकम्मल खेलें। फर्स्ट क्लास में 2 50s हैं निसार की, जो कि जिसको कहते हैं कि मौका मिलने के लिए आप बेताब तो सब होते हैं, लेकिन तैयार कोई कितना होता है। और अपने आप को फौरन जब सलमान इरशाद की मौजूदगी में उन्होंने जगह हासिल की तो फौरन इम्पैक्ट क्रिएट किया है इस बड़े मौके पे, जब ये मैच ना सिर्फ टेलीवाइजर बल्कि सुपर 8 स्टेज है सलमान। और यहाँ पर लाहौर का डगआउट और काफ़ी परेशान तासुरात यहाँ पे लाहौर के प्लेयर्स के ऊपर। और क्यों ना हो, आधी टीम जो है वो वापस डगआउट में जा चुकी। और हाशिम यहाँ पर रूम बनाने की कोशिश थी, लेकिन दानिश ने अच्छी बॉलिंग की और उनको फॉलो किया। 1 ही रन बना और इस पावर प्ले का अख्ताम हुआ 21 पे 5 लाहौर। ये तीसरा लोएस्ट स्कोर है इस टूर्नामेंट का पावर प्ले का। बहुत एनर्जी चाहिए लाहौर को यहाँ से उठने के लिए और शायद लाहौर के फैंस को भी, लेकिन ये टिपाल टी मोमेंट ही है जो कि आपको रात के लम्हात में जगा कर रख सकता है। डबल हेडर्स डेली और चाय बड़ी ज़रूरी है सलमान ने मोमेंट्स में। बिल्कुल, साथ एक आधा केक रस हो तो और भी एनर्जी आ जाएगी। ये लाहौर वाली, अब नान खताई भी होनी चाहिए शायद, या बाकर खानी, कुछ भी चलेगा। यस, लाहौर और कराची की राइवलरी। आप लाहौर से आए हैं और फूड के तो आप हमारे लीडर हैं, तो कराची की और लाहौर की जो फूड की राइवलरी है उसमें आप भी विनर मोइन अली की तरह कराची को देंगे या फिर आप अपने होम सिटी की तरफ जाएंगे? नहीं, देखिए दोनों की अपनी अपनी स्पेशलिटीज़ हैं। कराची भी जब आएँ तो टूर ख़त्म हो जाता है, लेकिन फूड की स्पेशलिटीज़ ख़त्म नहीं होती। इतना किस्म की यहाँ पर डिफरेंट कुजीन्स हैं। सो आप इनको मैच ना ही करें तो मेरा ख्याल बेटर है, क्योंकि दोनों तरफ अलहदा निहारी में दोनों की डिफरेंस है, दोनों की बिरयानी में डिफरेंस है। एक तरफ आलू है, एक तरफ गोश्त है, तो बहुत सारे फ़र्क हैं। यस, लेकिन ये 2 टीम्स पहुंची हैं लाहौर की जिनको आज दोनों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। बड़ा लंबा सफर है यहाँ वापस आने के लिए। हम ड्राइंग बोर्ड पे वापस जाने की बात कर रहे थे। आज लाहौर की टीम ने बॉलिंग करते हुए कई मोमेंट जनरेट किया और जिस अंदाज से निसार एंड ऑफ गेम के इंटरव्यू में, इनिंग्स के इंटरव्यू में बात कर रहे थे, तो उनको जो टारगेट दिया था इनके कप्तान ने एग्जैक्टली उसी अंदाज से उन्होंने बॉलिंग की। और फिर अब बैटिंग में एक मरतबा फिर इनको कम बैक करना पड़ेगा। बैटिंग का टारगेट शायद कप्तान देना भूल गया और इस टारगेट की वजह से हम दोनों को यहाँ पर दस्तरखान को डिस्कस करना पड़ रहा है। निसार ने ऊंचा खेलने की कोशिश की है लेकिन वो भी पकड़े गए। दानिश अजीज चाहे बॉलिंग कर रहे हैं या बैटिंग या कैचिंग, सब कुछ उनके लिए बेहतर आज कराची में। निसार भी गए। आज दानिश को गेम से बाहर नहीं रख सकते। 3 विकेट्स ले चुके और ये एक आसान कैच और गुलाम मुदस्सर की भी शानदार बॉलिंग का सिलसिला जारी। उनको दूसरी विकेट मिली है, अपने दूसरे ओवर में है अभी। और कराची की एब्सोल्यूट जो कह रहे डोमिनेशन इस मैच के अंदर, 22 पे 6 खिलाड़ी वो आउट कर चुके। और लाहौर की जो टीम है, बैटिंग टारगेट तो लगता है कि जैसे आज डिस्कस ही नहीं हुआ। और जिस किस्म के शॉट हमने देखे हैं अनटाइमली, ये फ्रंट फुट का चेक है और जब लैंड करते हैं, ऊप्स, ये अंपायर्स कॉल हो सकती है क्योंकि लाइन जो है वो इट बिलोंग्स टू द अंपायर। और यहाँ पर देखना होगा कि ये स्किट करके आगे गया है या लैंड ही लाइन के ऊपर हुआ है। मे बी एक डिफरेंट एंगल ज़रा क्लियर दिखा सके। ये एंगल कुछ बेहतर लग रहा है और उसके मुताबिक ठीक लग रहे हैं बज़ाहिर इमरान जावेद के लिए। उस एंगल में कुछ अगर गुंजाइश थी तो यहाँ पर सब कुछ ठीक लगना चाहिए। और ये जो पड़ाव एक आया था, लंबी वॉक शुरू कर दी है ऑलरेडी। देखिए, बड़ा ज़रूरी है इस रीप्ले के बाद जितने भी यंगस्टर्स इसको देख रहे हैं कि अगर आपकी हील लैंड होती है लाइन से पीछे और अगर आप ड्रैग करके आगे चले भी जाते हैं फिर भी वो नो बॉल नहीं है। आपका जो लैंडिंग पॉइंट है वो सुपरसीड करता है आपकी आखिरी पोजीशन को। और 26 पे 6 लाहौर।
अब आ गए हैं काशिफ भट्टी इस दवाई की दास्तान को या समेटने के लिए या फिर रुकावट डालने के लिए, लेकिन क्या कर पाएंगे। गुलाम मुदस्सिर को भी विकेट्स हासिल हो रही हैं, हर कोई अपना हिस्सा डाल रहा है। सुहेल खान ने इसकी इब्तिदा की थी अपनी स्विंगर के साथ लेफ्ट हैंडर को, लेकिन उसके बाद दानिश अजीज 3 और अब गुलाम मुदस्सिर अपनी 8 गेंदों में 2 खिलाड़ियों को आउट कर चुके हैं। एबिलिटी है लेकिन 34 इनका बेस्ट है, बड़ा एक्सपीरियंस है काशिफ भट्टी का। वो भी मुख्तलिफ नौइयत में बैटिंग करने के लिए आते हैं, लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज उनको सिर्फ लॉन्ग लेके जाना है अपनी इनिंग्स को, ताकि अब बज़ाहिर जो टारगेट रह गया मार्जिन ऑफ डिफीट को कम करने का वो हासिल कर पाएं। अच्छी लाइन, अच्छी लेंथ और शानदार बॉलिंग का सिलसिला जारी कराची बॉलर्स की तरफ से। और लाहौर ब्लूज का ये कार्ड और लगता है यही है कि इमरजेंसी का नंबर है। अगर आप देखें 2-0-10 3-0-1-6-0 तो ऐसे ही लगता है कि हेल्पलाइन है। और यहाँ पर बैटर्स जो हैं उन्होंने काफी मायूस किया है। $59 है लोएस्ट इस टूर्नामेंट में अब तक, लेकिन सुपर 8 स्टेज के अपने स्टैट्स होंगे जो कि बनना शुरू होंगे। आजाद जम्मू कश्मीर की टीम ने टारगेट बनाया था। गुलाम मुदस्सिर ने पिछले मैच में बड़ी एक्यूरेट बॉलिंग की थी, वो भी इस कंडीशन का फायदा उठाते नजर आ रहे हैं, जो कि हार्डली हिट कर रहे हैं डेक को। ऊंचा खेलने के लिए चले गए थे, फ्रंट फुट पे पुल करने की कोशिश, लेकिन एक मरतबा फिर वो गलती जो कि शायद कराची के बल्लेबाजों ने की, उसी में फंस रहे हैं लाहौर ब्लूज के बैट्समैन एक खराब स्टार्ट के बाद। गेंद एंगल बना के छोड़ जाएगी, अंपायर के ख्याल के मुताबिक ये चली जाती। गुलाम मुदस्सिर ने बड़े जोश से अपील की लेकिन मुतासिर न कर पाए। वाइड ऑफ द क्रीज डिलीवर किया, इसको एंगल के साथ बहुत ही अच्छा अंदर आया बॉल और एक अच्छा डिसीजन, क्योंकि 2 स्टंप्स आपको नजर आ रही हैं और ऐसे में बहुत चांसेस हैं कि या तो बॉल लेग स्टंप को अंपायर्स कॉल पे किस कर सकता है या फिर गुजर सकता है। तो एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और अच्छे अंपायर हैं और इनका बहुत ही शानदार फैसला। आसिफ याकूब पिछले 3 साल से नंबर 1 अंपायर भी हैं पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट में। गुलाम मुदस्सिर का ख्वाब जैसा ओवर, 1 रन और 1 विकेट। 22 पे 6 लाहौर। कल के मुकाबले दिखा सकते हैं, कल कौन कौन से? परफॉर्मेंस गहना गई है अब तक लाहौर ब्लूज की। जिस अंदाज से इन्होंने शुरुआत की थी बॉलिंग में, बैटिंग में मुकम्मल तौर पर बैकफुट पे गई। शानदार ये नज़ारा गो के कराची वालों के लिए। क्लियर स्काइज, बादल का टुकड़ा भी आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। सर्दी अगर सलमान आपको नहीं लग रही तो, और आप इसके अगर शौकीन हैं तो बताते चलें कि 3-4 दिन में कोयटा की हवाएं भी पहुंच जाएंगी। कोयटा की टीम वापस जा चुकी। बस मेरी जैकेट भी पहुंच जाएगी क्योंकि बहुत ज़रूरी है। कराची में जब हवा चलती है तो काफ़ी लोगों को जो बाहर से आए होते हैं उनके लिए बड़ा सरप्राइज होता है कि इतनी सर्दी यहाँ पर। एक शॉर्ट स्पेल होता है बट बड़ा कह लीजिए कि हैवी किस्म का वो स्पेल है। आरिफ याकूब अपनी लेग स्पिन का बॉलिंग का जादू जगाने के लिए आए हैं। शायद इनको जब टीम मीटिंग हो रही होगी उस वक्त कुछ ज़्यादा टारगेट्स असाइन किए गए होंगे। अब तक ये एक अच्छे बॉलर में शुमार किए जा सकते हैं इस टूर्नामेंट के। 9 विकेट्स हासिल किए हैं आरिफ ने, एक स्ट्रॉन्ग साइड के साथ हैं, लेकिन अब जब वो 6 विकेट्स के बाद आ रहे हैं तो मजीद शायद फ्लाइट वाला दे सकते हैं। बड़ी लूज बॉल कर दी लेकिन बहुत दूर थी, सिर्फ 1 रन के लिए पहला कंसीड किया आरिफ ने। कल यहाँ पर मुकाबला खेलेगा रावलपिंडी फाटा से। रावलपिंडी को पहले मैच में फतह हासिल हो सकी है, एबटाबाद को पहले मैच में शिकस्त हुई है, लेकिन वो पहले मैच की अपनी फाते सियालकोट की एक स्ट्रॉन्ग साइड का मुकाबला करेगा। रोजाना डबल हेडर्स हैं नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में।
खामोशी के साथ गुजरता ओवर। आरिफ ने अब तक अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन आज काफी लेंथ को अपनी वेरी कर रहे हैं आरिफ। देखिए अर्ली स्टार्ट है उनके लिए, नया बॉल उनके हाथ में है। पहला बॉल ज़रूर थोड़ा सा कह लीजिए शॉर्ट ऑफ लेंथ था, लेकिन उसके बाद डिसेंट बॉलिंग की है। और ये देखिए एक बार फिर बड़ी अच्छी लूप के साथ बॉल करते हैं और बिल्कुल भी घबराते नहीं हैं, बॉल को एयर देते हुए। और यही वो चीज़ है जो बहुत सारे यंग बॉलर्स नहीं करते आजकल, और ये इनकी बड़ी पॉजिटिव चीज़ है इनकी बॉलिंग के अंदर। ये देखिए एक बार फिर लूप दिया, और दो के इस तरह लेग स्टंप पे था, पिच हुआ, बट शानदार लूप देते हैं। और आरिफ जिस तरह के बॉलिंग कर रहे हैं, इस तरह के बॉलर्स आजकल कम मिलते हैं। ये देखिए अच्छा खासा रिप देते हैं बॉल को, रेव्स भी अच्छे हैं इनके बॉल के ऊपर। लाहौर ब्लूज शदीद मुश्किलात में 25 पे 6। As goes to the boundary, a rare boundary. Things have been very quiet for Lahore Blues. And look at the wickets column. It's just something that they like to put behind them and forget about it. But at the moment, the game is still on. And what a horrendous start with the bat. Indeed. That's why you take every boundary at this stage. Youngster Aftab starting off with the delivery at the wrong line. What could be the reason of that catastrophic batting by Lahore? When we saw on the similar pitch, Peshawar scored runs at a brisk pace. Sabzada Farhan, Haris, even in Lahore White's innings, Ahmed Shahzad batted very fluently. Here we saw Azam bat really well. Ahmad Alam got going. Just cannot point a finger on what went wrong. It was in the air for a while. Catch it was the call. Will be a boundary here. Second in the over. Too much width and good height on that as well to throw the bat and get some runs square of the wicket. Width on offer, and all day long we've seen that this pitch has carried consistent bounce. So that was the shot on. Too wide from Aftab. Just over correction from the mistake he made earlier in the over, where he sprayed down the leg side. Well, the brightest part of Lahore Blues would be Hashim on debut. With those two boundaries, is looking all right. 21 of 16. You got to keep yourself in the chase as a team. Once again, the thing comes in that there's no point trying to bat 20 overs and get nowhere close to that target. So grab the opportunities where runs are available, like Hashim did. And Kashif can play the supporting role. Yeah, that's not the supporting role. Far from it. He really went hard at that one. There wasn't much room. Aftab is quite nippy. That Kashif was clearly late on it. Low hands as well, playing under the ball.
Remember, this is the first game and it's a single league competition. 8 teams will play against each other. So net run rate might come into play as well later on in the competition. There's many subplots to this game. Obviously the target is 165, but there's still plenty to play for. 9 gone, 34 for 6. Tomorrow's games, the upcoming matches, Rawalpindi versus Fata in the afternoon, Abbottabad versus Sialkot in the evening from the National Bank Stadium. The AH Group presents Jazz Super 4G National T20 Cup into the Super 8 round. Final on the 10th of December. Interesting to watch Arif again. Good opportunity for him. He's a well-known figure in and around Karachi in the local cricket. Just got his opportunity on the big stage first time round in this competition, and he did get noticed. Distinct bowling action with loop and flight. What was impressive in the first over, like the great Shane Warne, when he bowls his leg spinners, he bowls it into that blind alley of a batter. This over he's staying wider. There's slight misunderstanding. The bowling leg spinner off middle and leg, that is where really you can test the batters and land them on a good length. That he was able to do in the first over. He's out. He's been given leg before. That's wicket number 7 going back. And I was just wondering, when will Arif Yaqub strike? And he has. Bowled 3 loopy leg spinners outside the off stump. And this one was a sharp spinning wrong un. Caught him back. Hashim couldn't read it off the hand, neither off the wicket. It was trapped right in front. Probably an easy decision for Zulfikar Jan. No problems here, but you'll see how sharply that ball would turn from outside the off stump. That is not the dismissal. But he set it up with those leg spinners because he dragged it wide outside the off stump. We'll come back and see it. Gone for 22, 36 for 7. First the wicket and then the sequence. Arif Yaqub's wicket. Yeah, on the back leg, nowhere near the ball with that bat. Ten overs gone, 37 for 7. There's nowhere a comparison there.
Aftab will continue into his second over. I think he's the only one without a wicket yet. Yep, he is. Off the mark. Well, in fact, it's the second run for him. So 3 for Danish Aziz, 2 for Ghulam Mudassir, a wicket each for Sohail Khan and Arif Yaqub. Time for Aftab Ibrahim to strike. Kashif will have to figure a way out to rotate strike. He's placed 13 balls for his 2 runs. I understand 7 are down, but he's been around there for 2.1 overs with the bat that he's faced. He should be able to just push it and not put the partner under more stress of trying to score because he's absorbed too many deliveries. Another swing and a miss. Kashif Bhatti is really struggling. What I'm not understanding is he's attempting the same shot every time a fast bowler comes. And he's not getting any connection whatsoever, not even an edge. And that is against Aftab. He's really just looking to hit it so hard. We've seen throughout the day, if you want to play that stroke, you just need to time the ball in that direction. It will fly. But he's looking to hit it too hard. Umad, long strides and overthrow will result. No, Umad had overrun that run. I was going to say, like, it will take only 8 to 10 paces for Umad to cover the distance. But this Lahore innings is a complete disaster. I don't know what the coach and captain will say about this innings. They got to be honest with themselves. Watch this, Umad. Would have been in a wayward throw, but no damage done. A lot of work to be done. 7 games for Lahore Blues after this. They'll have to get together as a unit. And as mentioned earlier, for Lahore Whites, just to have that chat with the think tank, how they need to approach in terms of chasing. Today, Lahore Whites looking so good. He's got bat onto it and he's got runs. Finally, Kashif finds a way to put one across the rope. Kashif is no mug with the bat. His over has come to an end. 11 gone, 44 for 7. This has been a strange innings. This time he got hold of that slow delivery. It was a half tracker. It set up nicely. And 4 runs. If this finishes very quickly, Lahore's net run rate will take a beating here. And probably that would be too much to overcome if that was the case later on in the tournament. This is a huge margin. They still need 121 runs. So the fight should not just end here. Umad and Kashif, very capable. The least they can do is just take this game deep and score as many runs as possible. So coming back earlier in the day, Lahore Whites were looking good. Ahmad Shahzad's wicket fell and then they just couldn't manage to score those good runs in the last 6 overs or so. Just 38 runs in 36 balls.
That's where they nosedived and could only manage 130 odd. And here it's just been bad shot selection, some brain fade, and just been throwing the wickets away in that chase of 165. That's the wrong one. Just goes a little straighter, got the inside part of the bat. Sharp spin, sharp turn. He's really in his groove. I mean, the game as a contest is not much to write home about, but Arif's skill on display, it's really fascinating the way he's weaving his magic. That sharp spinning leg break once again. And Kashif Bhatti, who's an experienced first-class cricketer, is all at sea. He's not even playing him off the back foot. He's just sticking that bat out. And now it just goes past. Was it quicker? Just went rapidly. Umpire says wide, yes. Even Azam Khan couldn't get a glove to it. 50 up with that. 50 for 7. That one went wrong from Arif, and Azam couldn't cover the line quickly enough. It was slightly round armish. I don't know if he was looking to bowl him round his legs, but getting it, turn it back from that angle was difficult. That is a perfect line and length. He's got drift. He throws the ball up in the air and then he gets it turned. The leg break and the googly. Pretty deceptive. It's got a slip in place. Oh, really beautifully bowled once again. Umad Asif was feeling for that delivery. The flight and turn was absolutely sensational from Arif. 12 gone, 51 for 7. There you go. That is a deliciously flighted delivery. Umad was feeling for it. Superb bowling. कहाँ इससे पिछला लाहौर कराची का मुकाबला आखिरी गेंद तक अलाइव रहा था और एक एंटी क्लाइमैक्स। लाहौर ब्लूज की टीम से तवक्कुआत ज़्यादा थी, टारगेट भी एक ऐसा था जिसके लिए एक अच्छे आगाज के बाद पेशकदमी जारी कर सकते थे, मगर नहीं। जोरदार अंदाज से स्मैश करने के लिए गए और इस खामोशी को तोड़ने के लिए काशिफ भट्टी को चौका हासिल हुआ। खराब बॉल है ये गुलाम मुदस्सिर की जानिब से, रेयर खराब बॉल जो आज कराची वाइट्स के बॉलर्स ने किया है आउटसाइड द ऑफ स्टंप। विथ भी था और फोर्सफुल शॉट है ये, जबरदस्ती जैसे मारते हैं, लेकिन अच्छा कनेक्शन हासिल किया है यहाँ पे भट्टी ने और 4 रन हासिल किए हैं। अच्छी बॉलिंग जो कि गुलाम मुदस्सिर का खासा रही है। खराब गेंद के बाद उन्होंने कमबैक भी अच्छा किया। तो अगर आप कोच होते लाहौर ब्लूज के तो ऐसी परफॉर्मेंस के बाद क्या उनको तलकीन करते, खासतौर पे बैटिंग की परफॉर्मेंस के बाद, क्योंकि हर एक ने एक से बढ़कर एक अपने आप के लिए मुसीबत खड़ी की। देखिए अल्लाह ना करे कि मैं ऐसी टीम का कोच हूँ, क्योंकि इतनी खराब परफॉर्मेंस मैंने लाहौर की किसी टीम की तरफ से कभी नहीं देखी है। थोड़ा एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। अच्छी क्रिकेट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन जो शॉट सिलेक्शन हमें आज देखने को मिली है वो बहुत ही खराब है। लेग साइड क्या ये पिच हुई थी। गुलाम मुदस्सिर बहरहाल मोमेंट जरूर जनरेट कर रहे हैं अपने पहले 2 ओवर में 2 विकेट्स हासिल करने के बाद। पैड पे जरूर लगी, लेकिन यस डाउन द लेग। या पिच आउटसाइड द लेग स्टंप। ये बॉल था, एक फाइट एक्सपेक्टेड थी, एक चैलेंज एक्सपेक्टेड था लाहौर ब्लूज की जानिब से, लेकिन बिल्कुल ही ढेर हो गए। काफ़ी डिसअपॉइंटिंग। और जब आप थोड़े अरसे में, अभी अब थोड़ी देर बाद शॉट सिलेक्शन देखेंगे, फॉलो विकेट्स देखेंगे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते अपने अलावा। ऑफ द बैक फुट ऊंचा खेलने के लिए गए और कहां खेल दिया, कहीं मॉडल टाउन, कहीं कजाफी स्टेडियम। नो, दिस इज कराची।
खूबसूरत नज़ारा। काशिफ ने जाते जाते कुछ हलचल जरूर क्रिएट की है, लेकिन क्या ये अभी भी गेम को लाइव रख सकते हैं? बिग बूमिंग 6। या खराब लेंथ है गुलाम मुदस्सिर की जानिब से दूसरी बार इस ओवर में। इस लेंथ पे अच्छा शानदार शॉट है ये, लेंथ को अच्छा पिक किया, छोटी बाउंड्री का फायदा उठाया, लेकिन ये बाउंड्री से बहुत दूर गया था, ये छत पे गया बॉल। शायद इस टूर्नामेंट के सबसे लंबा छक्का जो कि छत पे जा गिरा है। अब थोड़ा सा शायद रीबिल्डिंग करते हुए लाहौर ब्लूज की टीम थोड़ी एम्बैरेसमेंट को कम करते हुए। दो बाउंड्रीज कंसीड कर चुके हैं गुलाम मुदस्सिर, लेकिन अभी भी मौका दे सकते हैं कि इनको वो इनवाइट करते रहें, वो जाते जाते अपने कॉन्फिडेंस को बहाल करें, क्योंकि ऐसे शॉट्स के बाद एक मरतबा फिर अपने आप को रीग्रुप करना मुश्किल होता है। और शायद ये लाहौर के लिए एक चाय का कप ही हो जो कि इस शाम को बुलाने का मौका दे सके, क्योंकि ये बड़ा एक बैक टू बैक क्रिकेट का ऐसा ब्रूटल फॉर्मेट है कि जिसमें आपको ना सिर्फ ये कि अपने आप को फौरन गैदर करना है, अगले दिन फिजिकली भी अपनी बॉडी को ऑनलाइन लेकर आना है और मेंटली भी। अकील, खुशी में तो चाय डेफिनेटली पीते हैं, लेकिन क्या गुस्से में भी चाय पीनी चाहिए? क्योंकि इस परफॉर्मेंस पे गुस्सा ही बनता है। क्या कहेंगे इस शॉट सिलेक्शन को? पहले आप चाय की बात कर लीजिए, बाकी बात बाद में। तो जिसके भी फैंस हैं वो इस मोमेंट्स को जरूर एंजॉय कर रहे हैं। नेशनल T20 कप की गहमा गहमी नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची में अपने उरूज पे, जहां पर बैक टू बैक एक्शन पैक मुकाबले आपको मुंतजर है। 102 रन 42 बॉलों पे लाहौर ब्लूज को बनाने हैं मजीद ये मैच जीतने के लिए। कोशिश ये होनी चाहिए अकील के यहाँ से मैक्सिमम रन्स किए जाएं, क्योंकि एंड पे क्योंकि इतना टफ मुकाबला होने वाला है, काफ़ी अच्छी टीमें हैं, सारी ही अच्छी टीम है इनफैक्ट। तो अब देखना होगा कि कितना लेट लेके जा सकें, अपनी हार को डिले कर सकें, और नेट रन रेट पे ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इस टूर्नामेंट में सुपर रेट पे कहीं ना कहीं बात आएगी नेट रन रेट पे। इसे गाइड किया है थर्ड की जानिब, 2 रन यकीनी बनने चाहिए, दोनों एक्सपीरियंस्ड हैं, और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि थोड़ा तसलसल आया, कंसिस्टेंसी आई है रन्स मेकिंग में, और स्टेबिलिटी आई है थोड़ा, कि विकेट्स नहीं गिर रहे हैं। लेकिन बहुत हैरानगी हुई कि जिस तरीके से इन्होंने बैटिंग आज की, जो शॉट सिलेक्शन आज हमें देखने को मिली, कप्तान हुसैन तलत सबसे ज़्यादा कसूरवार ठहराए जाएंगे आज के मैच के बाद, क्योंकि अगर आप नॉर्मल प्लेयर हैं, यंगस्टर हैं, उनसे गलती एक्सपेक्ट की जा सकती है, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने PSL खेल रखा है, आपने पाकिस्तान शाहीन्स के टूर कर रखे हैं, तो फिर ऐसा शॉट सिलेक्शन और ऐसे मोमेंट पे जहाँ पे टीम को ज़रूरत हो, ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। यहाँ पे डेफिनेटली कामरान खान बात करना चाहिए उनको अपने कप्तान से। निकल गई गेंद, जहाँ पे सोचते ही रह गए शायद सोहेल डाइव करने के लिए, लेकिन उन्होंने अपनी से कोशिश भी की, बहरहाल रोकने के लिए आ गए उमर में यूसुफ बाउंड्री लाइन से। पिछले ओवर में 2 बाउंड्रीज हासिल की हैं। सोहेल इसको दायरे कैच पे रोकने में कामयाब नहीं हो सके थे, लेकिन बाउंड्री से बचे। और बड़ा टर्न, पूरा मौका से फायदा उठा रहे हैं टैलेंटेड गेंद करते हुए, अपना कोटा मुकम्मल करेंगे आरिफ याकूब, और हर तरह से अब एंजॉय कर रहे हैं, लेंथ को वेरी कर रहे हैं, फ्लाइट दे रहे हैं, रॉन्ग वन कर रहे हैं, बैट्समैन को मुतासिर कर रहे हैं, डिजर्व कर रहे हैं शायद एक और विकेट। जब ब्रेक बॉलिंग करते हैं, फ्लाइट देते हैं और स्पिन भी हासिल करते हैं, ये क्वालिटी है इनकी। ये बहुत ही इंप्रेसिव लेग स्पिनर सामने आए हैं इस टूर्नामेंट में, और फिर फ्लाइट दिया है। ये सबसे अच्छी क्वालिटी होती है लेग स्पिनर की, जब आप ब्रेव हों, फ्लाइट से बॉल करते हो। तगड़े बॉलर हैं, जिगरे वाले बॉलर इसे कहते हैं, जो कि डरते नहीं है कि हिट भी लग जाए, स्टिल अपनी फ्लाइट से नहीं चूकते हैं। बड़े टर्न के साथ अपना कोटा मुकम्मल किया, लेकिन ये इस रात को वो पूरा याद रखेंगे। इंपैक्ट क्रिएट किया 68 पे 7, 6 ओवर बाकी। आखिर नजर डालते हैं फॉल ऑफ विकेट्स पे, जिस तरीके से आज लाहौर ब्लूज के बैटर्स ने अपने विकेट्स कमाई हैं। देखिए बहुत लेट हुए, थोड़ा स्विंग हुआ बॉल, सीधा खेलना चाहिए था, रॉन्ग शॉट सिलेक्शन। यहाँ पे भी आप देखिए खुद विकेट दिया आपने, बहुत डीप चले गए क्रीज में, और यहाँ पे कासिम अकरम स्ट्रगल करते हुए नजर आए, स्विंग को बिल्कुल केटर नहीं कर पाए, विकेट दबाए, और ये सबसे खराब शॉट। सारा कसूरवार इस शॉट पे जाएगा। एक बार फिर तारिक के लिए ये बेहतरीन डिलीवरी थी। एक और खराब शॉट, निकल के शॉट खेल दिया, जबकि टीम को जरूरत थी थोड़ी स्टेबिलिटी की। रुगली को रीड ही नहीं कर पाए यहाँ पे हाशिम इब्राहिम। ऐसा लगा जैसे किसी स्कूल क्रिकेट का कोई मैच हो रहा है लाहौर ब्लूज की बैटिंग को देख के,
ऐसा लगा नहीं कि कोई फर्स्ट क्लास की टीम या कि बड़े लेवल की टीम खेल रही हो। तो डेफिनेटली काफ़ी कुछ सोचने को है लाहौर ब्लूज के लिए, टीम सिलेक्शन में और शॉट सिलेक्शन में भी इनफैक्ट, क्योंकि डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है ये कहना होगा। ऊंचा उठाकर खेलने के लिए गए, लेकिन नो मैंस एरिया में गेंद लैंड कर जाएगी ऑलमोस्ट एग्जैक्टली दरमियान में 3 फील्डर्स के। सुहेल खान को पॉसिबली इस सोच के साथ लाएं कि इस इनिंग्स को रैप अप कर सकें, और ये देखते हुए कि बैट्समैन बड़े शॉट्स के लिए जा रहे हैं। कराची को बड़ा एडवांटेज मिल सकता है। पेशावर ने जिस मार्जिन के साथ विक्ट्रीज हासिल की हैं, और गो के सुपर 8 के इस मरहले में आने के बाद इस बात के इम्कान थे कि जिस अंदाज से शुरुआत हुई थी इस टूर्नामेंट की, वैसे आपको क्लोज मुकाबले मिल सकेंगे। लेकिन पहले दिन में एक्शन तो बहुत आया, लेकिन एटलीस्ट वो लास्ट बॉल फिनिश, सुपर ओवर तो आप दूर दूर तक तस्वर नहीं कर सकते। लेकिन इसके साथ साथ टीम्स अपने आप को शायद असेस करेंगी और फिर शायद कुछ तब्दीलियां करने का मौका मिले लाहौर के कैंप में खास तौर पे। फिर हवा में, लेकिन फिर किस्मत के धनी, फिर गेंद नो मैंस एरिया में गई। उमर सद्दीक, जुनैद अली, असद मेहरान और अली शफीक इनके बेंच पे बैठे हुए हैं। शॉट सिलेक्शन, मैंने कहा ना टीम सिलेक्शन सबसे पहले उमर सद्दीक को खेलना चाहिए इस बैटिंग लाइनअप में जहां पे इतनी कमजोरी है। उमर सद्दीक डेफिनेटली बनते हैं। उनके साथ काफ़ी ऐसे प्लेयर हैं जिनको वापस भेजा गया है, चेंजेस की गई हैं सुपर 8 से पहले। और जैसे बिल्कुल आपने सही कहा कि इससे पहले जो मरहला था वो आसान मरहला था। असल कंपटीशन आज के बाद शुरू हुआ है, और आज के दिन ही लाहौर की दोनों टीमों की जो परफॉर्मेंस रही, इस पर काफ़ी कुछ सोचना होगा सिलेक्शन के बारे में, कप्तानी के बारे में, डिसीजन मेकिंग के बारे में। ये सारी चीज़ें सोचनी होंगी, क्योंकि इतनी बड़ी साइड, इतना बड़ा शहर, इतना बड़ा ज़िला, और ऐसी परफॉर्मेंस हो अगेंस्ट बड़ी टीमों के अगेंस्ट, तो ये नहीं चलेगा। ऐसे बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऐसा लगा जैसे कोई स्कूल की टीम खेल रही है। लगा नहीं मुझे कि फर्स्ट क्लास की टीम या कोई बड़ी टीम खेल रही है जिसमें बड़े नाम मौजूद हों। कासिम अकरम से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं, लेकिन जैसी आज उन्होंने खेली, ये क्वेश्चन मार्क है। ये हैरान कौन है कि पाकिस्तान का बेहतरीन उभरता हुआ टैलेंट थोड़ी सी भी स्विंग नहीं खेल पाता है और बिल्कुल क्लूलेस नजर आए। हुसैन तलत सेम, रिजवान हुसैन भी सेम। तो काफ़ी कुछ है यहाँ पे सोचने के लिए लाहौर को प्लेइंग 11 की सिलेक्शन में। जगह मिल गई और एक टिप्पे के साथ इसको रवाना कर दिया। काशिफ भट्टी ने हरारत जरूर पैदा कर रहे हैं अपने शॉट्स के साथ, जाते जाते पता ना भी मिले, लेकिन गैप को कम करेंगे भट्टी। ये एक्सपीरियंस है इन दोनों बैटर्स की, जो पार्टनरशिप है जो बिल्ड हो रही है, ये एक्सपीरियंस पे 39 रन की पार्टनरशिप है, और ये हम एक्सपेक्ट करते हैं इन दोनों एक्सपीरियंस मेंबर से कि एज पर द सिचुएशन ऑफ द गेम खेल रहे हैं। अच्छी गेम अवेयरनेस है यहाँ पे। अगर ये भी गलत शॉट मार के आउट हो जाते तो शायद बहुत जल्दी ये मैच खत्म हो जाता है, लेकिन उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि मैक्सिमम रन्स लेने चाहिए, नेट रन रेट को बेहतर करने के लिए करीब जाना चाहिए। ऑल्दो 90 रन अभी हैं, बट जितनी भी कोशिश करें उस टोटल के करीब जाएं। और इस मरतबा चूक गए, पीछे पड़े थे इसके, लेकिन काशिफ भट्टी का इम्पैक्ट अब तक अच्छा है, जो कि इस टीम के सीनियर खिलाड़ियों में शुमार होते हैं। नसार अहमद को आज मौका मिला, उन्होंने अपनी बॉलिंग के साथ इम्पैक्ट जरूर क्रिएट किया और कुछ हलचल वो भी मचाना चाहते थे। लंबे रनअप के साथ गेंद करने के लिए आते हैं, और जो खास तौर पर इनकी वो ट्रेडमार्क डिलीवरी है जिसमें एक शाउट के साथ ये स्लो वन डाल देते हैं, वो इम्पैक्ट क्रिएट करती है और बैट्समैन को चकमा देने में कामयाब होते हैं। क्या स्टंप्स की लाइन में आएंगे इन स्विंगर आने को? एक मरतबा फिर बैक ऑफ हैंड डॉट बॉल के साथ ओवर मुकम्मल 75 पे साथ। नजर डालते हैं कि लाहौर के स्क्वाड पे, और इनमें देखेंगे कौन से प्लेयर ऐसे हैं जो गए हैं। मोहम्मद वहीद एक अच्छी ऑलराउंड क्रिकेटर है, इनको तो शायद बगैर मैच खिलाई वापस भेज दिया गया, डिसअपॉइंटिंग है, अच्छे ऑलराउंडर है। उमर सिद्दीक का ना होना इस टीम के अंदर, जबकि बाकी बैटर्स इतने स्ट्रगल कर रहे हो, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। शावेज इरफान अनफिट हुए, इनको वापस जाना पड़ा। सलमान इरशाद का भी नुकसान हुआ। जुनैद अली, उनकी भी शायद फिटनेस पे क्वेश्चन मार्क है, वो भी मौजूद है, उनकी जगह तारिक नवाज को बुलाया गया। तो ये सब ये काम नहीं किया इनके लिए, शायद इनको दोबारा रिविजिट करने का सोचने का ज़रूरत है। थोड़ा एक्सपीरियंस लाना होगा, थोड़ा बेहतर क्रिकेटर्स को इस टीम में शामिल करना होगा, क्योंकि अभी पहला मैच है, 6 मैचेस और खेलने हैं इसके बाद, और अगर ऐसी क्रिकेट खेलते रहेंगे
तो बहुत एम्बैरेसिंग हो जाएगा, क्योंकि बाकी यूबीएल में या नेशनल बैंक में अपने स्पिनर्स की मदद से ये जीतते आए हैं मैचेस, लेकिन ये डिफरेंट चैलेंज है, डिफरेंट ओपोनेंट्स हैं। रिवर्स खेलने के लिए गए और राब्ता भी भरपूर मिला, कनेक्शन भी शानदार, जान भी बड़ी थी शॉट में, 4 रन के लिए रवाना। या काफी इनोवेटिव शॉट है ये काशिफ भट्टी की जानिब से। अब शायद जाते जाते थोड़ी बेहतरी दिखा रहे हैं काशिफ भट्टी, डिफरेंट शॉट्स खेल रहे हैं, एक्सपीरियंस अपने को इस्तेमाल कर रहे हैं, यही हम एक्सपेक्ट करते हैं इनसे। बाउंस जरूर हुआ था, ये यहां से नजर आ गया था 4 रन के लिए बॉल जाएगा, लेकिन अंपायर मेक श्योर कर रहे हैं कि सही डिसीजन दिया जाए। यस, बज़ाहिर चौके नजर आता है, उनसे ये डिफरेंस जरूर कम करेंगे, और अगर ये 28 गेंदों में सरवाइव कर जाते हैं और 28 ही रन मुकम्मल कर पाते हैं तो भी बहुत बड़ा मार्जिन रहेगा। तो वो शायद इस बात को अब असेस कर रहे हैं कि जाते जाते वो कुछ फड़फड़ाने की कोशिश करें और इसको वो अपने लिए फ़ायदे में कन्वर्ट कर सकें। गो कि अगर आप विनिंग टोटल की जानिब देख रहे हैं तो वो बहुत बड़ा डिस्टेंस है जिसको वो शायद कवर नहीं कर पाएंगे। इस गेंद ने डिस्टेंस जरूर हासिल किया, लेकिन 1 इंच पहले टिप्पा खा गई थी। काशिफ के अच्छे शॉट्स, हुनैन शाह जो कि आने के लिए तैयार और अपनी बैटिंग की शेडो प्रैक्टिस जोहर दिखाते हुए। ऐसे शॉट खेलने जल्द आना पड़ जाएगा लगता है हुनैन शाह को। ये पार्टनरशिप 44 रन की हो गई है। वंस अगेन वो तहिया कर चुके हैं, लेकिन दूसरे एंड पर रन आउट होने का खदशा था, वक्त भी था कि अपने आप को गैदर करके टारगेट करते स्टंप्स पे। ऑलमोस्ट तीनों स्टंप्स सामने मौजूद थे, लेकिन जैसी बुल्स आई पे थ्रो हिट्स की थी इमरान भट्ट और हुसैन तलत ने वैसी ना कर सके, वरना वहीं से वापस आ जाते। डिजास्टर शाम है लाहौर के लिए। 2 टीम्स उनकी जो कि नेशनल बैंक स्टेडियम में आज उतरी, दोनों को बड़े मार्जिन से इस परफॉर्मेंस का सामना करना पड़ा। ज़ाहिर फॉर्मेलिटी है, लेकिन अपनी से कोशिश जरूर की अब तक आशिफ ने, और गैप में ये निकालने में कामयाब, सर्कल को बीट किया है, डीप में मौजूद हैं आरिफ। 1 रन मिला और इसी के साथ स्ट्राइक रहेगी काशिफ भट्टी के पास 83 पे 7। So it's another appeal this time, and the umpire will have to check with the leg umpire if the ball carried to the keeper or not. The keeper and the bowler both are very confident, and Umaid Asif is just walking up to his partner Kashif Bhatti, who tried to hit this ball back to Lahore but did not succeed in touching. Or did he? Because if he has touched it, then maybe he's out if the ball has carried. So it's still 7 wickets down, 83 the runs on the board, and Lahore need another 82 of 24, which seems a far-fetched thing. And the front foot check seems all right, and the important thing will be to see if the ball has carried to Azam Khan. You see, went back in his crease, swung hard, and
This is the important part, whether the ball carried, and it seems as if it did. He was able to, looks like it, he got the gloves underneath the ball, but it's not the best angle to check the edge. It's not about the edge, I think, that they are checking, because the umpire went there and he asked the leg umpire. So that means maybe they're checking if the ball carried to him. And it does seem, but we'll need another angle. Yeah, the more you look at it, the more doubt you'll get. Obviously, these are 2D pictures. The action happens in 3D, so probably another angle would give a different picture. Probably this angle, Azam Khan's body will hide. Yeah, that won't give much to the third umpire. Obviously, the longer it takes for the umpire to take a decision, that means that doubt exists. And once there is doubt, it has to go to the batter. We'll see what the decision is. But at the moment, umpire just trying his best to find any angle which may give more clarity to make the decision easier. Yeah, exactly. When it takes that long, it means the umpire is not sure. The technology is not helping either. And the right decision in that circumstances have been made. Everybody was in their places ready to go, so it means that it was kind of expected, but there you go. The fight goes on for Lahore Blues. It has been a horror show, though, with the bat for them. Kashif Bhatti has walloped it. He's been swinging his bat since the beginning. Now he's starting to find the middle of the bat. Another handy boundary, and that margin has been reduced by 4 more runs. Yes, this one hit very powerfully through mid-off. The mid-off fielder diving to his left, trying to do his best, but to no avail. Smashed out of the middle of the bat, and he finally gets one in his middle of the bat. Kashif Bhatti, a bit too late this charge now. Still 78 required. And another boundary. This time edged over the keeper and towards the third. So Kashif Bhatti is now swinging his bat. He moves to 39 of 40 deliveries. Handy partnership. Bit late in the day. Once again, Kashif Bhatti, an almighty heave. An ugly slog, but he'll take the runs. Asad Shafiq, you can't say that he's worried or panicked, but still, you'd be thinking this game should have been wrapped up nice and early. This one has been struck very solidly. Fielder coming around, he will get to the ball. Ghulam Mudassir. Now, Kashif Bhatti, it seems like he's found his range. When he came earlier, he was swinging and missing. And now I think time in the middle has helped him. With Aftab being the bowler, it's been the most expensive for Karachi tonight. I think the field at the moment is making it so easy for Bhatti to swing it, because he knows that the bowler cannot pitch his shot. There is nobody behind square leg, and the one is towards a wider mid-wicket. This one once again has been clobbered over mid-off for a 6. And the reason being that the field, watching the field, the batter knows that the bowler will pitch it up. So he's ready to go after the ball. Not a good field positioning by the captain of Karachi.
This is his career best for Kashif Bhatti, 47 now, inching closer to his 50. Watch this first, same method, clearing his front leg, just giving it an almighty heave. This time once again, right in the arc, in the slot. It'll be good to have a look at that offside field. It's very strange. We got a very straight mid-off and an extra cover, and then we got a deep extra cover, and then a deep point just slightly behind square, and a third. Allowing Kashif Bhatti every time that room to free his arms. They changed the onside field, but the line of attack was still towards the offside. 17 gone, 100 for 7. Last ball, 1 run taken, and was it shy? And if it had hit the stumps, things would have been different. 7 down for 100 now, and 3 overs to go. 100 or so first-class games for Kashif Bhatti. Explain to me that technique of running between the wickets. He wasn't stretching, he wasn't dragging his bat, and if that had hit the stumps, he would have had a red face walking back, because it was elementary. Have a look. His bat is plonking over the line, feet coming over the line. That is not how you do running between the wickets. Well bowled this time, a Yorker, and the batter is running for 2, and Sohail Khan not the quickest to get to the ball, and easy couple, and Kashif gets to his 50. First 50 of his entire T20 career. 44 balls it has taken, and he's just giving respect to the total of his team, who are in shambles at 20 odd for 6 wickets. 66-run partnership for 8th wicket. They were 36 for 7. That was really embarrassing, but now Kashif's effort. And he's not finished yet, making Ghulam Mudassir bowl that wide, way out of reach of Azam Khan. 5 runs. What is happening, Karachi? It's amazing to see what Karachi bowlers and the captain are thinking. These are tail-handers batting, and they have hardly bowled a shorter one, hardly challenged them towards their ribs or maybe their head. And that is very strange, because all these fast bowlers have a decent pace, and still we do not see the stumps or the head being attacked. They're just allowing these batters to swing their bat and ride their luck. And we've seen in the entire match, the top order batters struggled with short pitch deliveries, let alone the lower order batters. Knocked him over though, this time around the wicket, hitting the base of off stump. Bhatti moving away, has been castled. 50 and out for Kashif Bhatti. End of a handy partnership between him and Umad. Front foot check, and there is no problem with that, and we all know the result. It was Bales coming off, this beautiful Yorker coming around the wicket, angling the ball in, and Kashif wanted to make some room, but the bowler did not give him anything. So 50 he got of 45, 107 for 8 Karachi, for Lahore. Usman Qadir. 95 matches, 240 runs, best of 36.
third wicket for Ghulam Mudassir. If he could repeat the dose to Usman Qadir, this could really come to a close very, very rapidly. Oh, sloppy. A bad ball and a bad piece of fielding there. You don't want to bowl a waist high full toss to the newcomer and Sohail Khan. Well, it was wonderful to see the bowler complaining to the fielder for sloppy work and the fielder complaining to the bowler for the full toss on the offside. So this is a very unique situation where the bowler and the fielder both are talking to each other. What have you done? And it's a no ball check going on at the moment. Whether the ball has been over the waist height of the batter, we shall soon know. Meanwhile, it is 1-1-1 for 8 and we are into the 18th over. And the front foot seems perfectly all right. And Usman Qadir there waiting on the back foot. Oh, borderline. I think that should be all right. That is just equivalent to the waist. Was marginal but fair. I think umpire will communicate that to his colleagues on field. Boundary nonetheless for Usman. Another low full toss. To Lahore's credit, they have dragged this from 36 for 7 to this far. But like Salman was saying, you have to question what kind of field plays and the bowling plans Asad Shafiq and his men had. Yes, obviously, when you make it too obvious to the batter that here is where I'm going to bowl, then obviously can plan a shot. That makes it so much easier for the batter. And you just cannot be predictable in this form of the game. You have to be able to keep the opposition thinking. Once again, the batter has smashed it and the fielder from long on will try his best. And he has stopped the ball from going to the boundary. That will be 2 only. But once again, we hardly have seen a short ball or a change of pace, short of length delivery. All full tosses or yorkers. And that is too predictable. Into the pitch, and it has carried, but it has been dropped. Afzal is the man who's under the ball. That is very, very sloppy, and a couple of runs added as well. So the first short one, and it is almost a wicket. And the fielder dropping an easy catch, 18 gone, 116 for 8, Lahore. Into the pitch. Once again, batters have struggled with this length. Pace on or pace off all night long, but this was very, very ordinary effort in the field. Especially when you are a keeper in the outfield, this should be eat and drink for the fielder. Had almost no pace in the stroke, but somehow he managed to spill this chance. So Sohail Khan is back, and he's bowled 3 overs only for 12. That is very miserly. Good economy, that. In fact, brilliant in this form of the game, and he's taken that first wicket where he swung the ball in a beautiful in-swinging yorker. 11 dots. And no better exponent of reverse swing as well at the back end of the innings. He's the perfect man to close this innings out. Usman Qadir will have to do the job against the guile of Sohail Khan. Slow delivery. Usman Qadir was planning something else, trying to be a bit too inventive. A wide run, and this game just continues. Half an hour ago, you would have thought it was going to end very quickly. Now Lahore has gone up to 117. That will help their net run rate.
because it's a long tournament and it may come down to that at the end of it. Absolutely, that could have been poor on part of their run rate, but now they have some sort of respect with the runs on the board and might not be as denting. Considering the depth, I mean, Umaid can bat, Usman can also bat. They hang in there for the 11 deliveries and get themselves up to 130, 135. No, that will be hugely respectable considering where they were. Yes, and I believe Karachi have not been going for the kill, and we have seen that in previous games as well, taking first 5 wickets really early and then letting the opposition off the hook, and that is not a good sign. Long levers, Umaid got hold of that, and that's gone all the way. This is handy runs coming through, and Umaid gone up to 22. He's really played better than most top order batters for Lahore. And also the equation becomes very simple: 9 fours and a 6 and you're home in 10 balls. Well, if it was that easy, Umaid will chop your hands off, Salman. Hitting their best bowler. Umaid has really put some pressure back on Sohail. Slow delivery, he read that one all right, but straight to the fielder. Just a couple of yards either side of Ghulam Mudassir, he would have got himself another boundary. One similarity every captain has done, that short fine leg remains up in the circle, square leg goes deep. So if you were to bowl full and try Yorkers, why not have the fine leg back and square leg up in the circle, because then the batter would have to sweep to get past that fielder, and if you are offline, there will be a deep fine leg. So that is something which we haven't seen throughout the tournament. Yeah, that's a good observation also, and especially if you want to bowl bouncers on this pitch, like we've seen short bit deliveries have been very successful. Why have 45 inside? You can send both of them back. It's just little things here and there. You don't expect them from such an experienced man like Asad Shafiq. If it was a young captain, you might say yes. But this is the second time they've let opposition off the hook. They got Hyderabad 5 down pretty cheaply, and then they were able to come back and post a total. Grant would tell you that he feels he's missed out on that. He read the slow delivery. He's just never arrived. So they're almost there, 127 already with 7 balls to go. If that 7 can go for another 15 runs, 140 plus from 30 for 7 is quite respectable. Indeed. And also this would send down a message to the top order of Lahore Blues that what a horrible night that they have had. Usman has got hold of this now. Phil is coming around over his head. Another maximum for Lahore Blues. They're really turning it on. The lower order batters have really shown their top order batters how it should be done. Imagine if they had a platform, that would have been a lot closer, this contest. Seeing all this effort from the lower order batters, it certainly comes to mind that what the top order was thinking. They were like clueless, losing their wickets left, right and center, playing shots which were not required at that time, and just doing all that too fast and too furiously, and in the end allowing Karachi that space to bowl those middle overs very calmly and very smoothly, where the batters Umaid and Kashif Bhatti, obviously they were under pressure, 7 down on 30 odd runs, and they were never in with a chance. But now watching how they have recovered, absolutely the batters could have done well. Even if they had scored 45 runs without losing many wickets in the power play, they still could have been in the hunt. It's incredible to know going into the last over, it's still mathematically possible. It won't be though.
Aftab has had the last laugh. Umaid going for the big one. Loses his middle stump. 9 wicket has been taken, but not before Umaid had played a lovely hand. Walks back dejectedly, but he should hold his head high because he really fought hard for his team. Still, that front foot needs to be checked, but he's... Come on, Hunain, you need to walk in. Front foot is fine, but you might be timed out. And there might be another Angelo Matthews. So he needs to cross the batter within the ropes, and they have also exchanged the bats. So Hunain is going to face Aftab, who has just taken the wicket of Umaid Asif. 1-3-3 for 9, Lahore. Salman, before that wicket, 50 runs came in 3 overs. If you can admire the tail end efforts of Lahore, you'd have to have serious question marks about Karachi. Well, I think Lahore batters, especially the lower order, they did pretty well, showed good guts and pretty good fighting skills. Played a few good shots, and there's another one, and this one is huge. I think it is the biggest. It has gone out of the ropes into the area where there are rollers lying over there. The machinery is there. A huge 6. Where has Hunain been batting? Wow. Take that. Aftab has had some punishment tonight where all the other bowlers were good for his side. But the number 11 came out, and look at that bat swing. And the sound the ball made after hitting the bat was sweet. And look at his soar in the night sky. Long way. This must have been, what, 85, 90 meter hit. 1 no ball, and a 6 goes off it. Wouldn't that bring a lot of pressure on the young bowler? And this is another stroke played, and it's another 6. Over point this time. Wow. Wow, Hunain Shah is brilliant. Where has he been? And the coach is smiling, seeing the lower order play like the top order. Well, so the fight is still on. 20 required of 3 balls. And who knows? A little error from Aftab, and who knows? You're right. And little Hunain is telling his brother Naseem, what you could do, I could do even better. These are great cricketing strokes. You have to say that. These are not slogs. But now his fun has come to an end. Aftab has had the last laugh, and Karachi would feel that they let this job linger on for far too long, but in the end they got the points. Yes, a yorker right on the target this time, and the batter, he had no more choice but to go after trying to hit it big, and the front foot seems absolutely fine. So he required a 6 off every ball, and also hoped that there would be a wide or a no ball along the way, which obviously didn't happen. This was well bowled, right in the block hole, taking the off stump, and Hunain Shah, after hitting 2 6s and exciting everybody, he goes, and Lahore are now all out and lose this game, and they only have their top order to blame. It's incredible. If you see the margin there, just 19 runs. 19 runs with 4 deliveries, 3 deliveries to go. That is how it ended up. And Lahore's top order definitely will sit and talk to themselves and say that they've let their side down very, very badly. Karachi will take the points. They would still like to sit down and think that this game had gone for far too long for their liking. Where they went wrong, they need a serious discussion. The games come thick and fast. There is no break days. All the 8 teams will be lining up tomorrow as well. But this game, Karachi will pick up the points. But for both teams, plenty to ponder. Yes, and Karachi play 11 a.m. tomorrow morning. So 1 a.m. So for them, it would have been even better to finish the job early, which they were in a position to do, but could not. And credit to the Lahore lower order.
They just put up a good fight, spent the time, and took it to a place where everybody got excited. But in the end, Karachi wins it by 19 runs. All the viewers and the spectators. Coming 65, we thought it will be a closer run chase and it could be a great game. But this start left Lahore reeling forward down really quickly. Arslan Talat, the skipper, reckless stroke from him. And the wickets fell until it was 36 for 7. Arif was very impressive again, bowled beautifully. And Kabaddi, after scoring a 50, Umaid partnering him for quite a while. Umaid's dismissal, and then Hunan, after hitting 2 sixes in the final over, lost his stumps.
All right, welcome to the post-match presentation of the final game today, and a win for Karachi Whites against Lahore Blues with a margin of 19 runs, and we'd say that they outbowled the opposition today in good style. Now, before we give away the individual awards, let's talk about our guest today, starting off with Mr. Chaudhry Saad Manzoor. He's Senior Manager, High Performance Center, Karachi. And next to him, SP Mohammed Ehsan Malik, Security in Charge, National Bank Stadium. Thank you for joining us. I'll request SP Mohammed Ehsan Malik to please present the AH Group Outstanding Player Award of 25,000 to Azam Khan for his 41 runs and a catch behind the stumps. He's got a stumping also in that. Azam wins the AH Group Outstanding Performance of the match. Next up, I'll request Chaudhry Saad Manzoor to please present the Jazz Player of the Match, a trophy and cash award of 25,000. That goes to Danish Aziz and his all-round performance, 24 with the bat, and then 3 wickets when he came out to bowl. Danish is a happy man with an all-round performance. We'll have a quick word with him. Danish, congratulations award के लिए. क्या चीज़ फील कर रहे थे मिस आउट हो रही थी पिछले मैचेस में जो आज आपने रीगेन की है? आई थिंक जब मैं बैटिंग कर रहा था तो मैंने देखा कि अच्छा स्पिन हो रहा है और अच्छी लाइन और लेंथ से अगर बॉल करे तो बैट्समैन के लिए मुश्किल हो रही है, तो कोशिश यही की कि अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉल करूं और विकेट टू विकेट बॉल करूं. और बैटिंग के लिए क्या आपका रोल था आज के मैच में, जो आपने देखा कि थोड़ी विकेट ज़्यादा गिर गई थी बीच में? क्या अंडरस्टैंडिंग थी आपकी और आजम के बीच में? थोड़ा सा ये था कि लंबी पार्टनरशिप करनी है. एक तो हम लोग की ये है कि 5 बॉलर्स खेल रहे हैं तो बैटिंग इतनी डेप्थ में है नहीं, तो कोशिश ये है कि एक बैट्समैन एंड तक जाए, लेकिन दोनों हम गलत टाइम पे आउट हुए, लेकिन ये कि 160 हमने अच्छा स्कोर कर दिया था वहाँ पे. एज एन ऑलराउंडर एक एडवांटेज या कह सकते हैं एडेड कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर बैट से नहीं हुआ तो बॉल से कुछ करके देना है. हाउ डू यू पुट योरसेल्फ, व्हाट डू यू प्रेफर मोर, अ बैट और अ बॉल? वेल ऑब्वियसली बैटिंग पहले है, लेकिन जब इस तरह की पिचेस होती हैं तो उसमें होता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है स्पिनर के लिए कि अच्छी बॉल करे तो विकेट्स मिल सकती हैं. चलिए, congratulations on winning this award and keep going. Now I'll request Hussain Talat, the captain of Lahore Blues, to please have a word with us. Hussain, अगर पहले बॉलिंग को देखें 165 इतना टोटल नहीं था कि वो चेज ना हो या फिर बहुत ज़्यादा रन्स भी नहीं थे. कहाँ गलती हुई है चेज में आपको लगता है? बिल्कुल, हमने जो सोच के पहले बॉलिंग की थी वो हमने उस रन्स के अंदर उनको रोक लिया था, पर मुझे लगता है एज अ बैटिंग यूनिट आज हम लोग अप टू द मार्क नहीं थे. मेरा ख्याल है ये टोटल हमें इजीली चेस करना चाहिए था जिस तरह की हमारी बैटिंग है, पर स्टार्ट में ही कोलैप्स हो गया तो जिसकी वजह से फिर आउट पे आउट होता रहा. जिससे आप देखते हैं कि 19 रन का मार्जिन था तो इतना क्लोज आ ही गए थे. कौन से ऐसे एरियाज हैं जो इमीडिएटली आपके कंसर्न होंगे एज कैप्टन जो करेक्ट करने हैं? देखिए, T20 क्रिकेट में आजकल वैसे ही वाइट बॉल क्रिकेट में अगर आप आउट नहीं करते तो फिर डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है, कोई भी टीम अगर हो तो. मुझे लगता है कि एक यही सेटबैक हुआ कि हम लोग बैक टू बैक विकेट्स हम लोगों ने लूज़ की. अगर कोई भी एक बीच में मिडिल ऑर्डर में या स्टार्ट में कोई पार्टनरशिप होती तो हम इजीली ये चेज कर सकते थे. चलिए, हार्ड लक टुडे एंड बेटर लक नेक्स्ट टाइम. Hussain Talat, the captain of Lahore Blues. Now I'll request the captain of Karachi Whites to please come and have a few words with us. मिक्स बैग था. अगर आप पहले बैटिंग देखें तो कुछ शुरू में यू फील बैड शॉट सिलेक्शन से फिर रिकवरी हुई है? जी बिल्कुल, जिस तरह से हमने स्टार्ट लिया था तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं जिस तरह की हमारी बैटिंग है कि हमें 175-180 पे फिनिश करना चाहिए था, लेकिन वहाँ बैक टू बैक आउट हुए मैं और उमर, जिसकी वजह से हम बैक फुट पे चले गए. लेकिन फिर क्रेडिट देना पड़ेगा आज़म ने और दानिश ने जो पार्टनरशिप लगाई, उन्होंने हमें मैच में कमबैक कराया. बॉलिंग से तो आप ऑफ कोर्स आज की इस परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा खुश होंगे. किस तरह से देखते हैं, क्या कोई की पॉइंट्स थे जो आपको लगता है जो आपने सही और टिक बॉक्स किए जिसकी वजह से ऐसी बॉलिंग दिखी? देखें, ऑब्वियसली सोहेल खान जो है वो हमारा प्राइम बॉलर है, नए बॉल से उसने हमेशा हमें आउट करके दिए हैं. स्पिनर का मेरे माइंड में था नहीं जब मैं अंदर गया, लेकिन जिस तरह से बॉल ग्रिप कर रहा था क्योंकि काशिफ ने जब वहाँ से बॉल किया तो उसको हल्का फुल्का हेल्प मिल रहा था, तो मेरा ये आइडिया था कि अगर दानिश को थोड़ा सा हेल्प मिलता है और अगर वो हिट मारने जाते हैं, अगर बैक टू बैक हमें आउट मिलते हैं तो हम बिल्कुल गेम में दोबारा इन हो जाते हैं. बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट है, जीते हैं एंड दैट्स ऑफ कोर्स काउंट्स. कौन से ऐसे एरियाज एज कैप्टन आप फील करते हैं जो आपको इमीडिएटली कंसर्न होगी और करेक्ट करेंगे? देखें, बैटिंग जो मिडिल में हम बैटिंग कर रहे हैं हमें उस पर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा क्योंकि अच्छा स्टार्ट हमें आज मिला लेकिन हम उसको कैपिटलाइज नहीं कर सके. तो ये हम कल सुबह हमारा फिर मैच है तो हम इस पर बात करेंगे कि अगर मिडिल ऑर्डर भी यहाँ से अच्छा टेक ऑफ करे तो हम 180 के पास पहुँच सकते हैं. चलिए, विन इज अ विन. कांग्रेचुलेशंस ऑन द पॉइंट्स एंड थैंक यू सो मच. गुड लक टुमारो.
Asad Shafiq, the captain of Karachi Whites, winning this match, and that also concludes the presentation. Oh, that's a good shout. Trouble there. There's trouble. He's gone. Oh, is it hit the stops? The air and gone. Number 3 goes. Oh, he's gone. That is suicide number 2. Oh, Tariq ने एच कर दिया. निसार ने ऊंचा खेलने की कोशिश की है, लेकिन वो भी पकड़े गए. This is another straw played and it's another 6. But now his fun has come to an end.
not a good day for Lahore cricket. Lahore Blues also been beaten by Karachi Whites by 19 runs. Karachi Whites been asked to bat first, 164 for 9 they scored. Azam scoring 41 runs. Nisar bowled beautifully for 3 wickets. Hunain Shah also into wicket 3. And in reply, Lahore Blues could only manage 145 runs. Kashif Bhatti scoring a 50. Umaid Asif scoring 24 runs. Danish Aziz, the player of the match, getting 3 wickets. Ghulam Mudassar also getting 3. Aftab also getting 2, but that was not enough. In the end, Karachi Whites winning it by 19 runs. Hello and good evening and welcome to National Bank Stadium, Karachi, where it is not a good news if you're a Lahore cricket fan, because both the teams from Lahore have been beaten badly. To talk about it and more, I've got the former captain Salman Butt, in fact, newly appointed consultant for chief selector. सबसे पहले सलमान आपको बहुत-बहुत मुबारक हो. दुआ गो है कि आपकी ये जो पोस्ट है आप इसके लिए बेहतरीन इंतखाब हैं और आप बहुत अच्छा करें. कैसा फील कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया अली, थैंक यू वेरी मच. आई रियली होप कि आई कैन फुलफिल द प्रॉमिस और फुलफिल ऑब्वियसली द एक्सपेक्टेशन, एंड आई एम थैंकफुल टू द PCB फॉर thinking about me like this and in such a role. Absolutely, much needed. सलमान, आज के मैच की बात करते हैं. बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रही लाहौर ब्लूज़ की जानिब से, स्पेशली बैटिंग की अगर बात करें, शॉट सिलेक्शन की बात करें. अफसोस हुआ होगा आपको भी देख के, क्योंकि आपने भी बहुत सारी क्रिकेट लाहौर से खेली है. नज़र डालते हैं शॉट सिलेक्शन पे, फॉलो विकेट्स पे, कि किस तरीके से इन्होंने विकेट्स गंवाई हैं आज लाहौर ब्लूज़ के बैटर्स ने. और मैं चाहूँगा कि आप ज़रा गो थ्रू करें शॉट सिलेक्शन के बारे में. देखिए, ये पहला बॉल स्लाइटली इन स्विंग हुआ है. यू शुड बी एबल टू प्ले इट स्ट्रेट. यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डीप चले गए कट मारने के लिए और अपनी ही विकेटों को शॉट मार लिया. और अगेन अननेसेसरी, यहाँ पे दे रिक्वायर्ड स्टेबिलिटी, अ बिट ऑफ पार्टनरशिप, एंड देन दिस वाज आइसिंग ऑन द केक फॉर कराची. कैप्टन ऑन द फर्स्ट बॉल, पुअर स्ट्रोक, एंड देन ऑलमोस्ट नो टेक्निक अगेंस्ट द न्यू बॉल जो कीपर खेले यहाँ पर. और उसके बाद एक शॉट फोर्स करने की कोशिश की, बट ये तो अब बॉलर्स आ गए. एंड हाशिम इब्राहिम could not read the wrong one. I think it was wonderfully bowled, and credit to the Karachi bowlers. उन्होंने stumps में बॉल रखे हैं. Yes, at times they have stirred, इधर उधर गेंदें की हैं, लेकिन जो आउट किए हैं वो सारे विकेटों में बॉल किए हैं. You hit, I miss. अच्छी बैटिंग कंडीशंस के अंदर उन्होंने लाहौर को बहुत ही कम रन्स पे आउट किया. एब्सोल्युटली, शॉट सिलेक्शन का जिक्र हमने किया और हम बैटिंग लाइनअप पे भी जिक्र डालेंगे कि इस बैटिंग को देख के लगता नहीं कि सलमान के ये कितनी तगड़ी बैटिंग होगी या फर्स्ट क्लास की टीम जैसे खेली है लाहौर ब्लूज़ की. क्या लाहौर में बैटिंग में टैलेंट कम हो गया है कि हम देख नहीं पा रहे हैं कि बैटिंग के जो हालात आज हमें नज़र आए लाहौर की? देखिए, यही टीम है जो पिछले मैचेस अच्छे खेल रही थी. बात यह है कि आपको गिवन टाइम एंड सिचुएशन के मुताबिक खेलना है. 160 रन्स हैं, ये कोई ऐसे रन्स नहीं है. स्पेशली यहाँ पर रात को कंडीशंस बेटर होती हैं बैटिंग के लिए. सो अगर इनिशियली सोहेल खान, वी ऑल नो ही स्विंग्स द बॉल, अगर आपको उसके 2 ओवर्स में 8-10 रन भी मिलते हैं और आप स्ट्राइक रोटेट करते हैं, एक आध बाउंड्री मारते हैं, यू आर बेटर ऑफ. यू जस्ट गेट इनटू द मिडल जहाँ पे आप प्रेशर क्रिएट कर सकें. लेकिन अगर आप पावर प्ले के अंदर 4-5 विकेट्स गवा देंगे तो आई एम सॉरी, यू आर इन नो पोजीशन टू मेक अ कमबैक. ये तो उन्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कराची की टीम का कि उनकी जो फील्ड पोजीशनिंग थी वो इतनी अच्छी नहीं थी. उन्होंने बाउंसर्स नहीं किए इनके टेल एंडर्स को. काफ़ी जगह कह लीजिए कि दे लेट देम ऑफ द हुक, तो लाहौर 145 तक पहुंच गया. वरना 30 पे 7 खिलाड़ी आउट के बाद नॉट मेनी टीम्स गेट टू 145. और आई थिंक कि कराची could have done even better, क्योंकि सुबह इनका पहला मैच है, तो they should have thought about cleaning it up, going for the kill. They did not. बट आई थिंक कि लाहौर की जानिब से एक ऐसा डिस्प्ले था जिसकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है. ज़रूरत से ज़्यादा फास्ट एंड फ्यूरियस बैटिंग करने की कोशिश की जबकि इतने रन्स नहीं थे. कुछ चेंजेस भी किए गए सलमान. हमने देखा कि तारिक नवाज जो विकेट कीपर बैठे हैं उनको बुलाया गया, उनको खिलाया गया. हाशिम इब्राहिम को खिलाया गया. उन्होंने तो चल फिर भी बेहतर बैटिंग की, बट एक स्क्वाड पे नज़र डालते हैं क्या बेहतर हो सकता था. कौन से ऐसे बैटर्स थे जिनको खिलाया जा सकता था. एक नाम जो मुझे नज़र आता है वो इस टीम के अंदर वो उमर सिद्दीक का है, जो कि शायद विकेट कीपिंग भी करते हैं और इनकी बैटिंग में भी स्टेबिलिटी दे सकते थे. देखिए, डेफिनेटली उमर सिद्दीक एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड कैंपेनर हैं. नए बॉल के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेलते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स शॉट्स खेलते हैं. आपके पास PSL का एक्सपीरियंस है उनके पास. कीपर वो कह लीजिए कि रेगुलर हैं, तो आई थिंक ही शुड हैव बीन यूज्ड. आई डोंट नो अगर वो फिट हैं या नहीं. हमने जुनैद को तो कीपिंग करते देखा भी, ही इज़ ऑन द रोड टू रिकवरी. उनको शायद कोई इंजरी थी, बट उमर सिद्दीक डेफिनेटली इज़ वन नेम हु कुड हैव मेड इट इनटू दिस 11. और तारिक नवाज जो हैं ऑब्वियसली उन्हें बुलाते ही इन्होंने खिलाया ज़रूर है, बट उमर सिद्दीक जिस तरह के बैटर हैं उस तरह का कोई कीपर बैटर नहीं है इस टीम में. एब्सोल्युटली, स्पेशली जब आपको ज़रूरत हो, आपके मिडिल ऑर्डर स्ट्रगल कर रहा हो, तो एक आइडियल मैन है. तो सलमान, जो हुआ सो हुआ. अब यहाँ से इस हार को कैसे जहन से निकालना है लाहौर ब्लूज़ के लिए, क्या एडवाइस करेंगे बीइंग अ फॉर्मर कैप्टन?
देखिए आप यू हैव टू फॉरगेट, टेक इट आउट ऑफ योर सिस्टम, थिंक ऑफ द गुड थिंग्स दैट यू हैव डन. इनके टॉप 4 में इनकी जान है. इमरान बट रन्स करते हैं, उनके साथ लेफ्ट हैंडर जो है वो उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं, लेकिन उनका डिस्प्ले अभी तक वैसा नहीं है रिजवान हुसैन का. और कमिंग फर्दर डाउन, हुसैन तलत पिवटल प्लेयर है इस टीम के, कैप्टन भी है, और उसके साथ कह लीजिए कि बाकी जो सिलेक्शन है वहाँ पर भी थोड़ा गौर करने की ज़रूरत है. पिक योर बेस्ट पीपल एंड आई थिंक दे कुड बी बेटर ऑफ के अगर थोड़ा सी स्टेबिलिटी आए. 1 से 2 विकेट से ज़्यादा आप पावर प्ले में नहीं गंवाने चाहिए आपको. आई थिंक कि वहाँ पर लाहौर जो है ना, दे वर नॉट केयरफुल. पिक योर बेस्ट 11, यही सलमान बट का कहना है, एंड राइटली सो. मेरा भी यही मानना है कि आप अगर आपकी शॉट सिलेक्शन के साथ साथ प्लेइंग 11 सही नहीं होगी तो आप क्वालिटी टीम्स के अगेंस्ट ज़्यादा दूर नहीं जा सकेंगे. आज के लिए हमारे पास इतना ही है. देखते हैं कि कल कौन से मैचेस खेले जाएंगे नेशनल स्टेडियम पे. पहला मैच खेला जाएगा रावलपिंडी का फाटा के साथ 3 बजे, और दूसरा मैच एबटाबाद वर्सेस सियालकोट होगा रात 8 बजे. बहुत ही तगड़े मैच है सलमान, दोनों ही लुक फॉरवर्ड करेंगे. शादाब को रावलपिंडी के लिए कप्तानी करते हुए नजर आएंगे. जी बिल्कुल, व्हाई नॉट. आई थिंक के तमाम प्लेयर्स के आ जाने से टीम्स की स्ट्रेंथ्स बढ़ी हैं, और ऑब्वियसली यहाँ पर जब ये खेलेंगे तो ये ज़रा एक्सप्लोसिव टीम्स हैं. ये दे बिलीव इन प्लेइंग कट लूज करते हैं जल्दी, और ऊपर से अटैक करने की कोशिश करते हैं. वी हैव हर्ड द डिफरेंट ब्रांड ऑफ क्रिकेट फ्रॉम अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स, सो इट इज़ एक्साइटिंग टू सी कि कल क्या आता है. और डेफिनेटली शादाब के आने से एक डिफरेंट स्ट्रेंथ पिंडी की टीम में ऐड होगी. इज़ अ कंप्लीट प्लेयर. एब्सोल्युटली सलमान, अब जाते जाते एक और क्वेश्चन, पर्सनल क्वेश्चन, कि आपके आने से क्या डिफरेंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, या पाकिस्तान के लुक फॉरवर्ड क्या कर सकते हैं? आई थिंक वी आर हेयर टू डू द कंसल्टेशन. अपनी रिकमेंडेशंस देंगे, एंड देन इट इज अप टू द सिलेक्शन कमेटी के वो क्या डिसीजन लेते हैं. बट डेफिनेटली हैविंग सीन द डोमेस्टिक सीजन इनसाइड आउट, हैविंग बीन प्लेइंग अमंग्स्ट दीज बॉयज फॉर सो मेनी ईयर्स, वी नो क्वाइट अ बिट ऑफ थिंग्स, और हम अपनी सिफारिशात बना के दे देंगे. आगे फिर इट्स अप टू द सिलेक्टर्स, द चीफ सिलेक्टर